So see that, please come to here. That was the last, I mean, two parts are there in our module number 6. Just I would like to give the revision on that part. Module number 6, actually it contains the two parts. As I explained, one of the assignment I was given, that is assignment number 1, is in, it is called correlation, and second is called regression. So I hope you people don't have need to prepare this topic even though in future also. Of course, you require to prepare for advanced techniques of these both topics, but that you will do it as per your, the requirement in the future or needs of your future. Then correlation may, see that here. We have divided this correlation, I would say better R. It is always lies in between -1 to +1. Okay, there are two ways to do that. Just it is pictorial, I will tell you. This is my technique to do the study when I was student, so that it will not forget. तो यहाँ correlation में दो types है हमारे. One is called Karl Pearson correlation coefficient. This is called your R, and this you will obtain by the two ways, but summation of, I will take x minus x bar into y minus y bar divided by that. You have done, the one assignment, no doubt. This is your just revision for sake of your coming exam. And summation of, you will get here x minus x bar whole square into, again you will get here summation of y minus y bar square. Even though this is also called as it is also called as, I would like to write here, is covariance of xy, which I have taken yesterday's in some class, which is called sigma x into sigma y. So this is one of the best formula where you will face some questions of 2 marks. Okay, but this is the formula. Of course, when I would say this is applicable when your x bar and y bar are in integers, form. Please remember this. Okay, when they are not in integers, so please you can move in second case. Let me say it is case 1 and this is called case 2. Just it is recollection I would like to do in 5 minutes. This case. Okay. So second case is that when your x bar and y bar are not integer format. Integers. So in this case, your R is always equal to, of course, the same formula, but we have need to go for assumption. And what we are going to assume, your mean of x. See here, I would like to write here first. Assume x bar mean is equal to suppose A and y bar mean suppose B. Of course, you have to select A, B. They should be integer from the list of x and y. But of course, it would be always recommended that अगर आप वो A और B को आप select करते हैं which is close to your x bar, because आपको x bar पहले ही पता होता है integer नहीं है that number से, तो that will become, it will help you to reduce the number of calculations. So R will become now, let's see. Okay, so R is equal to summation of, I would like to take here x minus A, which is my assumed mean. Y minus B is also assumed mean of our data Y. Then similarly here one factor, but I would like to write further, into divided by, again you will get same thing,
summation of you will get x minus x bar, but x bar की जगह a आएगा its square. So what is my intention? My this formula should be look like case 1, but case 1 में हमारे पास x bar है, यहाँ देखो y bar है, यहाँ भी x bar है, y bar है, इसके जगह हम assumption ले रहे. And of course I would like to take here, I mean you will not forget this formula, y minus b का square. Now this is look like exactly same to the r earlier car Pearson. थोड़ा सा assume mean करते, we are not dealing with exact mean, so इसमें थोड़ा सा modification होगा, and that modification let me say वो जो modification होने वाला है, that modification is our minus we are taking, then यहाँ हम ले लेंगे summation of x minus a, but इसका you know the whole square. Is that right? And we are taking summation of y minus b, and then you take divided by its in separately. Like similarly here, we will take summation of x minus a whole square. Please remember this is the whole bracket square divided by n, and similarly we can take here summation of y minus b but bracket square. I mean you take x summation of this and bracket square, यहाँ आएगा sorry, divided by n, divided by n. ये this I will remove because these notes may be helpful for you. So summation of y minus b करना है उसका square. So let me extend this. So you know these are the two cases. On each case you will face the one problem. This is called regarding with the assignment number 1, which is called the correlation. कोरिलेशन में मैंने बात किया था आपको, कल मैंने बात किया था, दैट लेट मी एडिट हियर अंडर, मतलब एक ही जगह. हाँ बोलिए सर. फॉर हाउ मेनी मार्क्स वन क्वेश्चन विल कम ऑफ दिस टाइप? दैट वी विल डिसाइड. सी दैट वी आर प्लानिंग टू आइदर 5 और 10. देयर आर 2 ऑप्शंस. आर यू गेटिंग? एक 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है और 10 मार्क का. आई मीन देयर आर 2 ऑप्शंस गिवन बाय द एग्जाम सेक्शन. तो वी आर एक्चुअली द प्लानिंग टू गिव यू द 10 मार्क्स क्वेश्चन in some you know the questions. The reason is that तो हमारे पास ज़्यादा you know the types नहीं है. As you know that we have only 4 types: Carl Pearson, then rank, then we have the correlation x on y, y on sorry regression, and then we have the parabolic case. तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सेट करना डिफिकल्ट है, तो वेटेज हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वेटेज जब हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ सैंपल थोड़ा बढ़ जाएगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? टू जस्टिफाई दैट. ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. या वेरी गुड क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आपको थ्योरी याद करना पड़ेगा, बट आंसर यू विल गेट इन 2-3 लाइंस दैट केस. सो नाउ दिस इज कॉल्ड योर आर. नाउ यहाँ क्या होता है, सी दैट एज आई से दिस इज द. हाँ प्लीज बोलो सर. उसका भी इंटीजर आएगा, लाइक उसका डिवाइड करने पे इंटीजर नहीं आ रहा है सर, लाइक कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा ऑफ x इनटू सिग्मा ऑफ y. वो डाउट था सर. हाँ प्लीज, क्या है इसमें ए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, उसमें भी r का वैल्यू इंटीजर रहेगा या फिर लाइक नंबर लाइक 0.9 ऐसा? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा? सी दैट दिस फॉर्मूला इज व्हाट आई एम सेइंग. इसमें देखो आर है, इसमें कोवेरेंस है, इसमें सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. द क्वेश्चन यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट ये 4 फैक्टर है इसमें, आर, कोवेरेंस, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स. इसमें से अगर 3 दिए होते तो सपोज यू हैव नीड टू फाइंड यू नो रेस्ट ऑफ वन, एंड दैट टाइम्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाट आई एम सेइंग. आर यू गेटिंग? समझा सर, समझा. थैंक यू. So but it is in 2 marks की बात कर रहा हूँ. मतलब you know intention is that you should recall this formula so that you will understand that if 3 parts are given, 3 parameters are given, then fourth I will find out how and which is the formula correct there, that you can do it. Are you getting? Okay, fine. यहाँ देखो अभी as I said -1 less than or equal to r less than or equal to 1 है. इसका मतलब सिंपल है, if I take r square then r square must be the you know the lies in between 0 to 1. It is simple logic.
that because जब हम स्क्वायर करते हैं आर का सो दैट विल लाइज इन बिटवीन 0 to 1 दैट वाज द माय रिग्रेशन में मुझे थोड़ा सा इसका द हेल्प लगता है. So this is corresponding to the part of my Carl Pearson sorry in rank, so it is small r. Another method है यहाँ थोड़ा सा I would say it is method 1 and method 2. तो method 2 को मैं थोड़ा सा नहीं I will take back here. See here method 2 I'm continue by that way. So this is called method 2 to find correlation, and this is called your Spearman's rank correlation coefficient. So this is denoted by R capital. So this formula is there. There are again two cases, my dears. One is called when rank is not repeated. Rank is not repeated. I mean it is identical. इस केस में आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं. It is 1. मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ so that many students are confusing. Minus I would say that here 6 times. Then again here summation of R1 minus R2 का whole square, and then उसका summation करना है, and entire term you are going to divide it by n cube minus n. So please remember this formula. But still your R should be lies in between -1 to the +1. So take that precaution. Instead of small, we have the capital R. You have solved some questions on that part, no doubt. Thus it is recollection for few students or revision for you people. Second case, your rank may repeated. The ranks are repeated. जब rank repeat होते तो I have seen one, the students, what we can say the wrongly, I mean mistake at the time of us, your checking of your tutorial yesterday, I mean assignment yesterday. So let me suppose maybe some student done like that way. So let me want to rectify that. इसमें क्या हो रहा है, say that here. The first let me write here M1 मतलब क्या होता है. M1 is called, assume that एक X1 है. ये जो X1 मेंबर है ये कितनी बार रिपीट होता है, that is called M1. So suppose X1 is repeated. X1 means one number is repeated how many number of times? How many number of times? So that is called your actually the M1. So M1 अगर मेरे पास सैंपल सपोज 10 है, this is called your X, this is called your Y, and मेरे पास सपोज 10 सैंपल है, प्लीज this is 10, this is 1 to 10. तो अगर एक मेंबर में लेता हूँ X1, सपोज मैं X1 is 100, तो 100 ज्यादा से ज्यादा 10 बार रिपीट हो सकता है, मतलब यहाँ भी 100 हो सकता है. आई मीन सपोज 10 स्टूडेंट का डेटा मैंने लिया है, assume that there could be possibility all 10 student could get 100 marks. That is one, but it will not more than that. So it means that मेरा M1 है, it is always going to repeat maximum number of times is equal to number of samples. तो नंबर ऑफ सैंपल अगर 10 है तो ज्यादा से ज्यादा एक बंदा 10 बार रिपीट हो सकता है, और लेस देन दैट. जितना लेस होगा और जितना ज्यादा होगा उसका इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ का रिपीटेशन के ऊपर आएगा. मतलब सपोज अगर 105 बार रिपीट हो रहा है तो रेस्ट ऑफ मेंबर्स आर विल रिपीट इन द रेस्ट ऑफ 5, इसमें उनका हो जाएगा. मतलब 98 है तो 98 विल नॉट रिपीट 10 टाइम्स, it will repeat what, tell me, maximum 5 times or less than that. It means simply, तो that girls ने क्या किया था, x1 को 100 लिया था. I mean that number she pick up rather than how many number of times repeated. So may some student have misunderstanding, please remove that. M1 is called x1, I mean any member how many times repeated in that case. So now assume there is suppose repeated k1 times. I mean एक number में ले रहा हूँ, it is n1 times. Suppose it is 2 for example. Like you can take M2 also. So suppose M2 is another member, suppose it is X2 is repeated how many number of times? It could be N2 suppose, or this is मतलब एक number लेता हूँ, suppose it is 3. Just it is I'm assuming, ऐसा भी हो सकता है. तो like you can go, but now these are X members.
जब हम x के मेंबर्स खत्म होते हैं तो y की मूव वी विल मार्च टुवर्ड्स y, तो y की तरफ जाएंगे। y में भी कुछ ऐसे बंदे हो सकते हैं कि रिपीट हो सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने 98 लिया, यहाँ भी 98 लिया, assume that this is called 35 35 35 ऐसा like this one. So now 98 भी repeat हो रहा है but it is lies in y, so still it is in the y, I would say that my m3, तो m3 is but suppose y1, मतलब 98 है इस केस में, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? Like you can go m4 but you know m1 m2 could be the part of your x but m3 m4 could be the part of y. तो ऐसा आपका लिस्ट बढ़ता जाएगा, कितनी बार रिपीट हो रहा है, that you need to keep in mind. And after that your formula will become, let's see, r is equal to, again it is 1 minus, I would like to take 6 times we have to take summation of r1 minus r2 इसका whole square, that, and now see entire term we are going to divide, entire term this we are going to divide n cube minus, I mean it is same like earlier case, only one factor I would like to add it here extra, and that is called your plus, वो m1 कितनी बार I mean repeat होता है, वो x1 factor is m1, इसका क्यूब करना है minus m1 divided by 12. Like similarly you can take m2 cube minus m2 divided by 12, and of course you can go like this one. Still जब तक जाना है, जब तक आपके पास m1 m2 m3 होते, शायद आपके पास m1 ही होगा, शायद आपके पास m1 and m2 होगा, और शायद आपके पास m3 भी हो सकता है. You can go up to that members and then just add it but in numerator and divide it by but n cube minus. So please remember this entire term is a separate which is going to subtract from 1, which is going to subtract from 1. So this was the little bit. और रैंक कैसे देने का वो भी मैंने बताया था. Many students solve that say problem, still they not understand. जब आपका रैंक suppose now for example here let me take 100 then suppose 300 then 300, just I'm taking one example, and then suppose it is 101. So I have the data of 5, 1 2 3 4 5 है. So now in this case now rank if I want to give for x like similar y, then you can go the ascending or descending. चलो मैं क्या करता हूँ हाईएस्ट से लोएस्ट जाता हूँ, बिकॉज रैंक इज ऑलवेज द जनरली वी आर गिवन हाईएस्ट को 1, तो नाउ 1 आएगा यहाँ, लेकिन 300 में टाई. तो व्हाट आई विल डू, द फर्स्ट रैंक that could be possible to give to this student, second rank instead of given first rank could be this one, but actually हमारे पास 5 रैंक है, तो let me divide this first and second rank among these two student and that will become 1.5. So now this the student will get 1.5 rank, this student will get 1.5 rank, but मेरा 2 rank खत्म हो गया है. I mean I have given the two the medal to the student first and second rank का, but उसके ऊपर 2 नहीं होता मतलब वो rank I mean जो medal है उसके ऊपर second rank silver नहीं होगा और फर्स्ट रैंक का गोल्ड नहीं होगा. सो वी आर गिवन बोथ ऑफ देम इज अ मीडियन, मतलब दोनों में लिखा होगा 1.5 रैंक 1.5 रैंक. सो दो बोथ स्टूडेंट्स विल हैप्पी. दिस कॉल विन विन सिचुएशन. लाइक सिमिलरली द 2 रैंक खत्म हुआ तो तीसरी रैंक की ओर जाएंगे, बट थर्ड रैंक अभी होगा हियर, बिकॉज 101 इज मोर देन 100 एंड 4 और 5 में भी टाई है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 में टाई है, तो 4 रैंक प्लस 5 रैंक डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज अगेन 4.5. So of course we have here again 4.5, the rank in between there. So similar way you can also allocate the ranks to the y also data. ऐसा y को भी करना है. So this is called rank of x, then you can write rank of y and then you can take the difference square, so that you will get sum is always positive because square term sum is always positive. Could be possible your rank that difference is the 0, तो अगर a difference 0 आता है तो entire term will become the 0, I mean only r will become 1, and 1 मतलब आपको पता है perfect square होता है, that thing. So that was little bit revision of my the last 3 hours lectures of the last week of assignment number 1. I hope you don't have any doubt. Is it clear everyone? Yes, sir. आप तो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम. मैंने क्यों ये किया कि बिकॉज आप सब लोगों को एज अ टू बिकम डेटा साइंटिस्ट ये सब बहुत काम में आने वाला है आगे जाके, टू डू द प्रोग्रामिंग, टू डू द कोडिंग ऑफ दिस डेटा. yesterday one student sent me very good, that I don't know the name of that student, but still
Just I will go to the WhatsApp that and check the name of that. ये है क्या? नहीं, एक मिनट है, ये भी नहीं है. Yes. So let me appreciate the student Om Alve. Are you there, sir? Om Alve, are you there? Yes, sir, I'm here. Yeah, yeah. So you said me yesterday very nicely. This one of the approach. He actually let me appreciate to the Om. Entire this process he had done into the coding in different way, of course, and he got the answers. So please remember, अगर आपको बेसिक अच्छा सा आता है तो what he did very absolutely correct, and as you go in coding in precise form, then you will get answer very close to the precise form, because data थोड़ा कम होगा, पर data जब large होता है, that time may be possibility that due to the human error I am talking, some the xy values could be that what we can say that wrong, or it is not going to fit in the data. ह्यूमन एरर की मैं बात कर रहा हूँ, मशीन एरर की नहीं बात कर रहा हूँ, एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन अवर प्रिसाइज रिजल्ट इन द फ्यूचर. और इसके लिए हाउ टू रिमूव दैट? सो देर आर मेनी टेक्निक्स आर अवेलेबल इन राइट नाउ द मैथमेटिक्स. वन ऑफ द टेक्निक आई थिंक ही गॉन थ्रू दैट एंड ही डन द कोडिंग. He sent me that very nicely. तो यू कैन ऑल्सो अप्रोच दिस गुड, दैट यू कैन वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट. बट ए बेसिक अगर आपको अच्छी तरह से आता है ना, तो ऑफकोर्स यू विल, तो आपको इसका स्ट्रेंथ समझता है, देन यू विल लर्न अनदर मेथड्स आर देयर अवेलेबल, ऑफकोर्स लाइक ओम इज डन लाइक दैट मीन्स द मेनी मेथड्स आर अवेलेबल. देन आप उसका फायदा ले सकते हैं, एंड देन यू कैन गो that you enhance that the coding process. You have the lot of scope is there, no doubt, but basic understand that theory part is very important, what I always insisting on that part. क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको मिड सेमिस्टर मतलब एग्जाम के लिए, लेकिन इसके बाद में आपको कोई नहीं बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज मशीन विल टेक केयर ऑफ दैट. यू जस्ट वांट टू इंस्ट्रक्ट थ्रू द कोडिंग हाउ टू डू इन प्रिसाइज वे दैट मशीन by machine. That is please, so that is, let me appreciate home, very good work done. You can approach, some student come together, you have right now the scope to enhance yourself. Yeah. Then ओके, थोड़ा सा इसके नीचे में जाता हूँ, यहाँ एरो किया था मैंने रिग्रेशन के बारे में, बट थोड़ा सा आई थिंक दैट स्क्रीन के बाहर जा रहा है, मतलब स्क्रीन के बाहर मतलब आई कैन राइट बाय दैट साइड ऑल्सो, बट जब मैं पीडीएफ लेता हूँ तो थोड़ा सा वो मिसमैच होता है, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. सो लेट मी गो बाय सेम वे. नाउ यहाँ रिग्रेशन से हम चालू करेंगे. सी आई विल टेक रिवीजन ऑन दैट, एंड देन बिकॉज सम स्टूडेंट को रिवीजन होगा, एंड एक सी आई थिंक वन क्लास इज ओनली द पेंडिंग दैट दे विल, they have to learn starting. So please see, regression में, regression it is called fitting of data in mathematical model. So अगर regression आपको करना है, मतलब entire data we are going to fit into the mathematical model. There are many approaches having, like Ohm also done by that one of the the method, which is the method we call descent method, gradient method na, I think that Ohm, I think let me check. Yeah, gradient descent method. He apply the gradient descent method. So there are many methods are available, see that, but of course please keep in mind that आप बोलेंगे सर इतना मेथड है तो हम क्यों सीखेंगे? These are the basic concepts, see that here. All methods are enhancement of this what we are learning right now. Or every method have its own the beauty. Every method has strength and weaknesses. वो भी ध्यान में रखना है आपको. Doesn't mean this method is given the perfect answer, but same time that method may have some the weaknesses also. तो आपको कौन सा method is a proper appropriate, I would say that, for particular the what we can say the data, और डेटा भी आपके पास होगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा, which method is too much appropriate, that we have need to decide, that machine will not decide. So that you will learn by understanding the all methods thoroughly. So now regression matlab, just to understand, it is a foundation of that concept, is a fitting of data into the mathematical model in optimized way. So that we are fitting the data, we are going to fit the data in only the one equation or two equations. You can say that. Why I'm talking two equations? Because right now we are talking about bivariate, it could be more than that.
which is not part of syllabus. तो आप कैसे fit करते हैं on optimized way? So you are going to take care of all the scatter points, सब scatter point का आप the care करेंगे, and you are going to fit entire data into that the format. What we can say that is a way is called regression concept. अभी रिग्रेशन के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये आपको आर पता होना चाहिए. यू शुड नो फर्स्ट आर. आर मीन्स कोरिलेशन, हाउ मच वी हैव इन द टू वेरिएबल. assume time being r is 0, I mean there is no correlation, so there is no meaning to feed the data into the straight line. कुछ बच्चों को मैंने सिखाया, मतलब मोस्ट ऑफ क्लासेस में मेरा हुआ है, एक्स एंड वाई हमारे पास डेटा है. देखो प्लीज कीप इन माइंड, और मैंने सीखा इसलिए मैं थोड़ा सा एक बता रहा हूँ. एक्स एंड वाई का हमारे पास डेटा है विद इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइंडिंग आर. आर हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, but still we can fit this data into assumed straight line y equal to x plus b, or x is equal to ay plus b. I mean these are the both lines. I would say that ये डेटा हम इसको फिट कर सकते हैं, this data, but we don't know that x and y are correlated to each other or not. It is again the question is remaining, because without knowing r also we can proceed. But actually क्या इसका concept है कि आपका r भी strong होना चाहिए. It should be that correlated to each other maximum way. I mean it is in the 100%, or to us that 100% should be there. It is in the excellent way, or perfect way it should be the correlated. ये भी very important है. We cannot ignore that r. In this case मतलब डेटा फिट कर सकते हैं, but r should be how much is very important in that, and that's why we have need to go to the actual formula of your what we can say uh, regression. So there are two types, I would say. The first type is called theory part. देखो first type is called, yeah, so it is called your fitting of data. We are going to fit data but into straight line, into straight lines. And second, I would say that fitting of data into the parabolic form. This is the first part. So I would like to talk about this case first. Fitting of data into straight line. So there are two approaches now to fit the data into the straight line, where we have the different types of the slopes. The first, I would say that you have to fit the data. I mean you have to find the regression line simply. Regression line y on x, y on x, y on x. अभी आपको y on x में लाइन फाइंड करना है, तो थ्योरी पार्ट व्हाट सेज, जो थ्योरी पार्ट है वो ऐसा बोल रहा है कि व्हेन यू वांट टू फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x, देन दैट इज एक्चुअली द ऑब्टेन्ड बाय सच अ वे y minus y bar is equal to r times. Now देखो y on x है, so please keep in mind for new students, I mean mostly the one batch of AXTC, the regression line y on x है, तो you have to start from y to the left hand side and start the x you take right hand side, because we are talking about x is independent and y is depend on that x. So हमारा always हम क्या करते हैं, जो independent है वो right hand side में लेते हैं, and लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं डिपेंडेंट. तो व्हाट वी कैन डू बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट इन माइंड, इसको हम याद करेंगे फॉर्मूले को. सो वी आर टेकिंग आर इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. हमारा रिग्रेशन लाइन y on x है, तो फर्स्ट आई विल टेक सिग्मा y and then I will divide it by sigma x. So please, this is the also very important for the GATE exam and even the competitive exam also. That even though yesterday I talked with SI discussion why principle of economics subject fifth semester को है, sorry sixth semester को है, and in our college some visiting faculties are coming, those are also teaching to the Wellington college, Wellinger college or Bajaj management, that college is there. उसके तो आई टॉक विद देम ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन द वे रिक्वायर्ड इन स्टॉक मार्केट आल्सो. इट इज बिकॉज प्रेडिक्शन इज अगेन देयर, एज यू नो दैट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आल्सो इन दैट द फाइनेंशियल मार्केट, आपको रिग्रेशन दिस ओ आप देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स इन दैट डोमेन. तो ये आपको ऑल इक्वेशंस आपको लगेंगे फॉर प्रेडिक्शन ऑफ दैट.
तो r into sigma y by sigma x, and it will multiply by x minus x bar. So this is actually the formula of regression line, but y on x. So you also need to keep in mind this formula. Now if you simplify this formula, तो आपका y as it is आएगा. Y bar is a constant that can be taken to the right hand side. So I can say by simplification you will get r into sigma y by sigma x, which is as it is, but it will multiply by x. Now see, it is minus a factor, again constant will multiply by constant x bar. So one constant आएगा. A y bar also, if I take to the right hand side, it will become constant. So entire term is one of the constant. Let me say time being it is suppose equal to the C1. So now this entire equation will look like our, the equation of a straight line of your 12 standard, or I would say that like the 10 standard part, and this is called your a straight line. This equation is a straight line, so it is called as y equal to, you can say here, ax plus c1. ऐसा दिखेगा वो. And this is called equation of straight line, where I would say that my a is a called constant. This is no doubt your r into sigma y by sigma x, but rather than now this is for your understanding I have written, but equation मुझे ऐसा दिखेगा, I would say like this one, y equal to this factor which I have, this is called actually the slope of the line, which I will say in a regression, the concept, it is called byx. What is byx? Is called the regression coefficient of the line y on x. So it is called byx. Instead of this factor, it will multiply by x, and we have some constant. It is called the c1, which is called the y-intercept. Which is called y-intercept. So now here my byx is called रिग्रेशन कोएफिशिएंट. थोड़ा ध्यान दे दो, इसका बहुत कुछ द फायदा है आगे जाके, आप डिटेल में जाते हैं तो. रिग्रेशन कोएफिशिएंट बट ऑफ line y on x. So that's why my suffix is in that same sequence, y on x. Y पहला है, x बाद में है. And this is called your r times sigma y by sigma x. Then तो ये बी वाई एक्स को हम थोड़ा सा जब एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, तो r is always called covariance of xy upon that sigma x into sigma y. You check it that I was given at the starting this r my formula. Yeah, yeah, देखो ये r is equal to covariance of xy upon sigma x into sigma y. So if I plug this formula here, then this will multiply by but sigma y by sigma x. And by simplification, simply you will get here covariance of xy upon you will get, but here I mean sigma y get cancel, so you will get sigma x but square. And this is called actually the variance. This is called variance. So अगर इसका फॉर्मूला भी हम लेने की कोशिश करेंगे, तो it will become summation of x minus x bar into y minus y bar divided by I will get sigma x square. It is called summation of x minus x bar whole square. Of course, I don't want to take root because square I want. And this is one more again formula which may require us for to find byx. I mean, in when you are developing the some programming, that time you need to give the this formula in your programming to find byx. When because x हमारे पास है, y हमारे पास है, तो x बार y बार हम फाइंड कर सकते हैं, x बार y बार का स्क्वायर एंड देन कॉलम हम फाइंड कर सकते हैं. तो जस्ट इंस्ट्रक्ट इन द प्रोग्रामिंग your byx should be like this one, so automatically it will it will extract from the data x bar y bar and that calculation, and you will get byx. and अगर byx आपको मिलता है तो आपका 50% जॉब हो जाता है, because you are replacing that byx is here, only constant of the y intercept will remaining, of course. So that will easy you will get it, and that's a calculation. Okay, the similarly see that here the second line of regression I would like to take. Okay, यहाँ लिखता हूं मैं second type. It is called the regression line, but x on y. थोड़ा ध्यान दे दो, हम उल्टा ले रहे हैं, x, but this is on y. तो एज आई से, जैसे अभी मैंने बात किया था, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए राइट हैंड साइड में, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में. मतलब आपका यहाँ क्या हो रहा है देखो,
In this case आपका x is depend on y, so regression line will become same way, x minus x bar is equal to, now I will get the same here coefficient which is called r, but जैसे मैंने बात किया था यार x on y है तो पहला मुझे आएगा सिग्मा x and then I will get sigma y. Please note down these changes. Ratio will the interchange, I mean reciprocal होगा of course. Interchange earlier was sigma y by sigma x, now it is sigma x by sigma y. Please remember this, the big changes, very important change. This is into I will get y minus y bar. Y bar constant, r constant, sigma x, sigma y both are constant. So of course your entire this term will become constant. So by simplification, as I said earlier, only x I will get to the left hand side. This factor, let me say r into sigma x by sigma y is one of the constant, let me say. It will multiple to the y, as well as this is constant into y bar is one more constant. X bar is one more again added to the right hand side. So I will get new constant, let me say time being C2. And now this is called your x is equal to, this is called regression coefficient, but x on y, so my suffix will change xy rather than byx. It will multiply by y plus C2. And this is called new more equations, which equation is called regression line, but regression line x on y. This is called regression line x on y, and earlier I can say this is called regression line but y on x. Please remember that regression line x on y and regression line y on x both are not given the same answer. They are actually, there is no symmetricity. You will get different answers. Please remember that one. So now from that, the byx is here. Byx is equal to r times, but I will get here sigma x by sigma y. ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. मे सम क्वेश्चंस विल आस्क इन 2 मार्क्स ऑन सच अ फॉर्मूलेज. आपको आर दिया है, आपको बी एक्स वाई दिया है, और दैट सिग्मा वाई दिया है. गो फॉर सिग्मा एक्स. सो प्लीज रिमेंबर सच अ क्वेश्चंस मे हेल्पफुल फॉर अस टू गेट 2 मार्क्स. But if I want to go further simplification, then R is always equal to covariance in between two variables upon sigma x into sigma y, and this ratio what I have sigma x by sigma y. So of course simplification I will get here covariance of xy upon but here sigma y square, because sigma x get cancelled. And this is again similarly here summation of x minus x bar into y minus y bar divided by I will get sigma y square, which is called variance of y. And variance of y मतलब क्या होता है? You have to take variation. You have to find out how much variation we have in data from its mean. So I will get here y minus y bar, but it's square and then take sum. That. So this is called your vxy. Okay, now let me add again very important, the some formulas or concept on basis of these two results. So this is second part. I mean third part it could be. See byx into bxy. If I want to take the product in between the both slopes, then it is equal to, as I said, r into sigma y by sigma x, but you will get your r into sigma x by sigma y. तो आपका आंसर आ जाएगा r स्क्वायर. इसका मतलब है कि आपको r कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहले एट स्टार्टिंग आपको नो नीड टू नो दैट, आपको नहीं पता है तो भी चलेगा. You will extract that r from the data by finding regression line x on y and y on x, and then you take corresponding their what tell me slopes. अगर आप उसके स्लोप्स लेते हैं, आई मीन वंस यू फिट द डेटा x on y and y on x, and if you take their corresponding slopes, then we can say that वो स्लोप का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो r स्क्वायर मिलेगा. बट यूर r इज ऑलवेज इक्वल टू सी दैट, वो मुझे लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्लस और माइनस रूट, because we are always taking the root into the plus or minus form, byx into bxy.
ये सब मैंने क्लास में पढ़ा है बच्चों को, एक्सेप्ट दी वन बैच ऑफ EXCC. But one thing please keep in mind, when we are taking the root of your r square, it will become plus or minus r. इसका मतलब हमारे मन में एक the question will arise कि r should I go with plus or minus sign. और ये कैसे होता है ध्यान में रखो, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द BYX एंड BXY शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर. r स्क्वायर मतलब क्या होता है, positive, because r, as I said that my r is always lies in between -1 to +1, so my r square should be lies in between 0 to 1. मतलब r square is always positive because square term है, and always it is less than or equal to 1. ये भी ध्यान में रखो. तो यहाँ क्या होता है, आर स्क्वायर पॉजिटिव आने के लिए आपको दो कंडीशंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज दैट here both BYX and BXY must be positive, or negative. I mean both should have the same sign. तो ही आपका आर स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. I mean negative negative into positive, or positive positive again positive. This is the first note. Second note, see that here, if suppose my BYX is a negative, my BXY must be the negative then. एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए. अगर दोनों भी नेगेटिव है, but you know the well, my BYX into BXY, I mean this is negative term into this is negative term, so of course you will get positive term, and this is called your r square. This is called your r square. R square मतलब negative negative positive, but you know the well, my r is always equal to plus or minus root of this term, as I said right now. तो अब इसमें आपको दो वैल्यूज मिलने वाली है, एक तो प्लस मिलेगी, एक तो माइनस मिलेगी. ना which I need to pick up is very important. That totally depends upon the sign of your BYX and BXY. So please remember in this case, if all the both results are negative, अभी दोनों भी रिजल्ट्स आपके नेगेटिव है, तो इन दिस केस your r is also negative. So you have need to pick up the negative values of r rather than plus values of r by taking the root. And similarly, I would say that here, if my BYX is a positive, my the BXY is also the positive, then of course your R is a positive. And positive का मतलब होता है आपका correlation in positive direction. Negative का मतलब होता है you have the correlation but in negative direction. So I mean negative correlation, and although we have the two values of R plus or minus, so very very important to understand this concept. Some question may will come like that way, you have need to decide your the nature of correlation. So now you will ask me that sir हमको BYX और BXY कहाँ से मिलेगा? So BYX और BXY we have need to extract from the given regression lines, the regression line से जो भी regression line हमको दिया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से we are going to collect BYX and BXY. What is BYX and BXY? Just to check it here, this is called coefficient of y in regression line x on y. देखो इसमें, so if अगर जब रिग्रेशन लाइन x on y होती है, तो मेनी स्टूडेंट डूइंग द मिस्टेक, लेट मी रिपीट हियर, जब रिग्रेशन लाइन x on y होती है तो आपका ओनली x शुड बी लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल थिंग्स शुड बी द राइट हैंड साइड. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक हियर टू नॉट कंफ्यूज मोर इन दिस केस, I will come to that point. See that, assume that here I have 3x is equal to 4y minus the 5 suppose. Abhi this is suppose regression line. This is regression line, but as I said, there are the two ways here. You can say this line is a regression line x on y, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि this line is a regression line y on x. That is not mentioned, or it will not mention in your the exam. You have need to identify this line, is it on regression line y on x or x on y. तो हम क्या करेंगे, अगर ये regression line suppose regression line सपोज x on y हम कंसिडर करते हैं, इफ यू एज्यूम दिस इज अ रिग्रेशन लाइन, सपोज x on y,
इसका मतलब x is only should be the left hand side and all term should be the right hand side मुझे लेना है. तो I mean this equation can be written, let's see, x is equal to 4y, but it will divide it by 3. 5 also divided by 3 means this line is now look like exactly the regression line x on y. Now same line could be written regression line but y on x. y on x का मतलब होता है y should be left hand side and all terms should be the right hand side. तो अभी अगर y left hand side में रहते हैं तो यहाँ मुझे 3x ऐसा ही मिलेगा, minus will become plus 5, but of course let me divide it each term by 4. Now same equation can be written in different fashion. So it could be said that y on x or x on y. लेकिन any one of the the approach is correct. I will not say, never I will say that both approaches are correct. We can write in this fashion, but of course one of the line could be the that wrong. For example here, if I say this line regression line y on x, अभी देखो तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दो, या स्लोप है 3/4. 3/4 मीन्स इट इज लेस देन 1. 3/4 means less than 1. यहाँ जो स्लोप मुझे मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड 4/3 means more than 1. So what I can say that approach of the line y on x is the exact rather than considering the line on x on y. वो हमको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है. That I will tell you in today's session when I will take some problems. But you understand the theory part is here. How one line can be written in both ways, but which one is correct, we are need to decide that. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों का साइन सेम होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन. अभी सी दैट हियर, अगर दोनों का साइन अगर सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स आई वुड से दैट कि दीज आर नॉट रिग्रेशन लाइंस. आई मीन देयर इज नो फिटिंग ऑफ डेटा इन, आई मीन जो भी लाइन दिया है हमको, दे आर नॉट गोइंग टू फिट इन द करस्पॉन्डिंग डेटा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, सेम क्वेश्चन में लेता हूं, आई एम रैंडमली ले रहा हूं. सी 3x the plus 4y is equal to minus 5, and another line let me take, now this line suppose here, and another line let me take here 5y, the plus or minus 3y, sorry 3x is equal to suppose 7. तो अभी हम क्या करेंगे, there are two approaches right now. Let's see here. The first approach is that the regression line, if I want to take x on y, it could be one of the possibility x on y. तो मेरा x one side में रहेगा, दिस इज केस वन, एंड ऑल थिंग्स शुड बी द राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो गया, -4y हो गया. ये क्या हो गया, सॉरी -5 एज इट इज, ये -5 है, -5 एज इट इज. ओके, -5 एज इट इज, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, एंड ऑफ कोर्स लेट मी डिवाइडेड बाय 3, लेट मी डिवाइडेड बाय 3. सो इट इंप्लाइज दैट, इससे मुझे पता चल रहा है मेरा bxy इज इक्वल टू -4/3. ये हो रहा है. नाउ इफ आई डू लाइक दिस वन, अगर ए लाइन मैंने रिग्रेशन x ऑन y लिया है तो सेकंड लाइन वुड बी द y ऑन x. रिग्रेशन लाइन अगर ए x ऑन y है तो सेकंड वुड बी द y ऑन x. ये मेरा अज्यूमशन है. इफ आई अज्यूमिंग दिस इज इक्वल टू द x ऑन y, तो सेकंड वुड बी द y ऑन x. अभी y ऑन x लिखना है आपको, तो y इज इक्वल टू minus will become plus 3x plus 7 divided by 5 divided by 5. और इस साइड से आपको पता चलेगा या byx is equal to 3/5. But now my dear student, keep in mind here, one my bxy is a negative, one my byx is the positive, and these cases never happen in regression concept. बिकॉज दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का साइन नेगेटिव होना चाहिए. इट मीन्स दैट वॉट एवर आवर एज्यूमशन इज राइट नाउ द रॉन्ग, आई मीन इट इज गोइंग टू फेल. तो ऑफकोर्स वी हैव अनदर केस. तब तक आप कंक्लूजन नहीं करेंगे उसका रिग्रेशन कंसेप्ट का. नाउ आई विल गो टू द सेकंड केस, आई मीन सेकंड एज्यूमशन. सो और आई वुड से, और नाउ लेट मी एज्यूम, अभी देखो ऊपर क्या किया था मैंने, this line, the first line which I assume x on y, अभी ये wrong मुझे दिखा रहा है. Why wrong? Because both the byx and bxy का sign तो that opposite हो रहा है. तो I mean it shows me the wrong concept.
So now let me take my assumption back and let me go to the another assumption. So my now my assumption would be this line is a y on x, and let me go by this way also, because it is not mentioned the given lines or x on y or y on x, and it will never mention, please keep in mind. तो आपको ये assumption करना है कि x on y से क्या हो रहा है और y on x से क्या हो रहा है. If I assume it is y on x, then देखो आपको y लेफ्ट हैंड साइड में रखना है. तो अगर y अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो you know that my 3 will become minus 3x. This is minus 5, but it will divide it by 4 and it will divide it by 4. So now here I will get byx, but this is called minus 3 by 4. Okay, the same way let me assume here also under this case. My assumption is now this case, एक को मैंने y and x को consider किया है, तो second my will become x on y. तो now I will assume this line now x on y. अगर ये लाइन हम x on y में कंसीडर करते हैं तो x शुड बी टू द वन साइड एंड द रेस्ट ऑफ और अदर साइड. तो नाउ 3x अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आई मीन राइट हैंड साइड में लिखा तो इट विल बिकम 5y minus 7. तो my x will become simply you know that 5 by 3y minus 7 by 3. And if you understand from this case, so still my I would say that my bxy is also coming 5 by 3. I mean it is positive. Now a negative way. Again, you know that in this case, there is no, you know, the regression because, you know, the both should be positive, both should be negative. अभी हमारे पास दो ही के chances थे. Either first line I will consider x on y or first line I will consider y on x. Now all possibilities are over. So my this case is also the fail. Earlier case also the fail. So my remark would be the both lines are not forming regression concept or regression lines. Both lines are not forming the regression line. मतलब जो भी हमारे पास lines है, they are not going to fit the data. I mean it is absolutely wrong model what we can say in this case. So this is our conclusion from this one. I hope are you understanding please? Theory part. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. So now a theory part में जा रहा हूँ. You can also refer my this. I mean ये focus में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा mid semester को सामने रख के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. Please keep in mind. Just I am teaching you in a I mean just in career of your engineering in the data science and that in these cases. वो theory part थोड़ा सा ध्यान दे दो. डिटेल में जाना चाहिए. Then you can keep in mind theory problem solving is only part of mid semester that you will do it easily that. Now this is the case. अभी देखो इसमें से the one thing is that I would like to take some theory सर अगर questions. Yeah, please. हेलो हाँ सर, हाँ अगर बोलो. दोनों नेगेटिव है तो आर नेगेटिव नहीं होगा ना, बिकॉज आर हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज आर स्क्वायर नॉट आर. नहीं 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 नहीं, R is always see that here very good. So दोनों अगर नेगेटिव है तो आपको R मिलेगा, but that will come in negative form. But one more thing is that please remember that very good. You know the question is here. See here, दोनों negative है. Assume that my b by x is equal to -3. Of course, because we can't have the you know the control on slope. Slope could be more than 1. I mean -3 है suppose. आपका bxy, you know just I am taking one example. It is suppose -5. -5 की जगह 1/2 भी लेता हूँ, not to confuse. अगर आप इसका you know the r find करने की कोशिश करेंगे, see that so r is always equal to under root of this, but you know that it is plus or minus r आएगा आपको. तो now in this case because root is always plus or minus, तो now by x is आपका -3 है, आपका bxy is -half, so minus minus you know that it will become plus. So of course you know that you will get two values of this answer which is called 1.5. Because -3 into -half, still you know the both values are negative. जैसा आपने question पूछा, see that both values are negative. If I put here
I mean, this is one of the condition which are required to go further. Both should be negative or both should be positive. We have again further more constraint. अभी दूसरा कंस्टेंट क्या है देखो, आई मीन वन हर्डल हमने पास किया, जैसे क्या कि दोनों का यू नो द साइन सेम होना चाहिए. यस वी हैव द साइन सेम्स, बट आगे जाके क्या प्रॉब्लम आता है देखो कि -3 इंटू -12 विल बिकम 3/2. 3/2 इज पॉजिटिव, तो आपको आएगा 1.5. 1.5 का भी आपको कुछ तो रूट मिलेगा, 1.5 का भी रूट मिलेगा, बट ऑफकोर्स दैट रूट विल कम यू नो द ग्रेटर देन यू नो द, ये जो आंसर मिलने वाला है ऑफकोर्स इट विल बिकम ग्रेटर देन 1, बिकॉज रूट 1 का 1 आता है, तो 1.5 का रूट ग्रेटर देन 1 आएगा, एंड ग्रेटर देन 1 यू विल गेट टू वैल्यूज. सो आई मीन अगर हम इसका आंसर निकालते, आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, बट आपको दिस आंसर विल कम 1 पॉइंट समथिंग. And you know that 1 point something matlab your R is going more than 1. R is going more than 1 is also absolutely wrong. मतलब पहला जो हर्डल है वो आपको देखना है एज ए बिकम डेटा साइंटिस्ट, आपका दोनों भी स्लोप का साइन सेम है क्या नहीं, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन टू टेस्ट. अगर ये फर्स्ट कंडीशन अगर आपका फेल होता है तो नो नीड टू गो फर्दर टू डू द एनालिसिस ऑफ द लास्ट डेटा जो आपके सामने आएगा वन कंपनी का और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज देयर. दैट इज द फर्स्ट टेस्टिंग कंडीशन आई वुड से. अगर टेस्टिंग कंडीशन पास होते फर्स्ट, देन यू कैन गो टू द फर्दर टेस्टिंग कंडीशन. योर आर शुड बी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to the +1. You do the product of the both results and your R you can take here. Yeah, but अगर ऐसा भी हो सकता है, see that here another example let me take to give answer of your question. See, ऐसा भी हो सकता है कि आपका R, sorry, byx is equal to, let's see what I'm saying, my byx is equal to minus, you can say here 4, and bxy it could be the -1/5. ऐसा भी हो सकता है बिकॉज स्लोप्स कुड बी मोर देन 1 और लेस देन 1. अगर हम इसकी कोशिश करेंगे तो r is always equal to plus or minus root of product of both. The -4 into -1/5, if you check it, this answer of course I will get in inside positive. And you know 4/5 मतलब रेशो मेरा लेस देन 1 आएगा, तो ऑफकोर्स आई वुड से दैट, मुझे आंसर पता नहीं, बट ऑफकोर्स आई वुड से दैट दिस आंसर विल बिकम यू नो द लेस देन 1. I mean 4/5 you know that is a 0 point something, and 0 point something का अगर आप रूट लेते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा इज ऑफकोर्स इट विल बिकम लेस देन 1. इसका मतलब मेरा R इज आई विल टेक द लेस देन 1, जो भी मेरा आंसर आएगा. थोड़ा सा मेरे पास एक मिनट है, मोबाइल का कैलकुलेटर से जस्ट आई विल राइट देयर root of 4/5, is it right now? 4 divided by 5. Yes, sir. कितना आ रहा है? I think I am getting 0.8. Am I right now? Yes, So I sir. will get here under root of 0.8. And under root of 0.8 अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, is it right? 0.8. तो my answer is 0.89. Yes, sir. My answer is 0.89. I think 894 है. Anyway, that ये मेरा आंसर आएगा. But please remember, I have the two results. Now all results are you know the correct because they are less than or equal to 1, and R must be less than or equal to 1. तो इसका मतलब है मेरा जो वैल्यू है either plus or minus, but now I will select any one of them. Now that depends upon the sign of this case. अभी दोनों का साइन निगेटिव है तो मेरा आर भी निगेटिव होगा, तो माय आंसर इज नॉट प्लस बट माय आंसर इज -0.894. दैट माय द you know the machine will pick up the answer, and this is called my dear student negative correlation. Sorry, negative, correct, negative correlation in between the two variables instead of positive there. और नेगेटिव जब कोरिलेशन होता है, याद करो मेरा वो पीपीटी, याद करो पीपीटी. नेगेटिव कोरिलेशन में स्लोप नेगेटिव होता है एंड पॉजिटिव कोरिलेशन में स्लोप पॉजिटिव होता है. दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप. जस्ट यू चेक इट. आई होप आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir.
और नेगेटिव कोरिलेशन Yes, sir. मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी? एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक बंदा बढ़ता जाता है तो दूसरा बंदा भी बढ़ता जाता है, और एक बंदा कम हो जा रहा है तो दूसरा भी कम हो जा रहा है। सो वी कॉल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइदर वन इज इंक्रीजिंग, सेकंड मस्ट बी इंक्रीज। आइदर एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो वाई मस्ट बी डिक्रीज। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में क्या होता है, वन इंक्रीज एट द सेम टाइम अदर डिक्रीज, सो इट इज कॉल्ड इनवर्सल प्रोपोर्शनल। तो वो हमको डिसाइड करने को एनालिसिस में आता है कि साइन के ऊपर। ये सब डेटा साइंटिस्ट करता है। ओनली यू नो द साइन विल कम देयर, सो रिजल्ट्स विल कम देयर। द एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस डेटा। दिस इज, आई होप, आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, प्लीज? Yes, sir. ओके, या, तो अभी I will take some questions on that part, and then I will try to solve the, after that you know, बाकी का तो सिंपल है, आप कैलकुलेशन घर में भी कर सकते हैं। there is no any problem for you people. या, तो मेरा एक्चुअली नोट्स एक बच्चे के पास है, तो दैट्स वाई, बट आई रिक्वेस्ट हिम टू सेंड दस व्हाट्सएप में, तो मैं जस्ट आई वांट टू ओपन दैट, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आई विल टेक दैट, ओनली द क्वेश्चंस आर देयर। तो नाउ सी हियर, ओके, तो वन एक क्वेश्चन ऐसा दिखा है, देखो, अगर आप थोड़ा सा नोट्स ओपन कर सकते हैं तो मुझे क्वेश्चन लिखने की, आई मीन आई विल सेव माय टाइम टू राइट द क्वेश्चन। उसमें आंसर भी है, जस्ट यू नो, जस्ट आई एम टेलिंग वन ऑफ द क्वेश्चन, द पॉसिबिलिटी हाउ इट विल कम फॉर योर एग्जाम। थ्योरी पार्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ, विच इज मिसिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सी हियर, the one more question is that, if this is the question like this one, if r is equal to rxy, मतलब क्या, correlation in between xy is equal to 0.4, covariance in between xy is equal to 1.6, and sigma y square is equal to, 1 minute, 25. Okay, then find standard deviation of x. Now such a questions could be the part of your exam, दो मार्क्स के लिए ऐसे, और सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कुड बी देयर। अब इसमें देखो मेरे दोस्तों, आपको आर दिया है, कोवेरेंस दिया है, सिग्मा वाई भी दिया है, आई मीन रूट ऑफ दैट, सो यू हैव नीड टू गो फॉर सिग्मा एक्स, you need to go for sigma x. So it means that, please keep in mind, फॉर्मूला हमको लिखना है अभी। कैन एनीवन विल हेल्प मी, which formula let me take so that it will helpful for us to go for sigma x? Yes, covariance of xy upon upon sigma x sigma Divided. x into sigma y. Great. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है, let me tell you what. Okay, so now here see that here r is given to us 0.4, covariance of xy is given to us 1.6, sigma x is a target, and sigma y is I would like to put। अभी इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, मैंने बहुत स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। नाउ लेट्स सी, आई हैव सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका मतलब माई सिग्मा वाई इज इक्वल टू +or -5। आर यू एग्री? Yes. Yes, sir. Now tell me, shall yes I take +5 or -5?
Sir, +5 because R is positive. Very good, very good. That should be logic is there. Otherwise, आपका concept, I mean negative correlation में जाएगा. Is it right? So you can do like that way. Very good. So 0.4, uh, 0.4 is equal to 1.6 by sigma x. Into this answer, let me take 5. और अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको सिग्मा एक्स मिलेगा. सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1.6 बाय 1.4 इंटू 5. कितना आता है मुझे पता नहीं. आयुष्य उसमें दिखा है क्या? 0.8. 0.8. सो दिस इज योर आंसर. देखो 2 लाइन में आंसर आएगा आपका. आई होप, आर यू गेटिंग? Yes, sir. अभी आप मुझे बताओ, आपको आर दिया है, कोवेरेंस दिया है, सिग्मा वाई दिया है और सिग्मा एक्स फाइंड करना है. Can you solve, suppose out of these 4 parameters, any three suppose are given, then you will find rest of one. Am I right now? Yes. Yes, sir. Good, good. So like the one questions, एक question से मैं आगे जा रहा हूँ, so that you will understand how to handle such a questions. Okay, आगे जाएंगे. Yes, sir. Yeah. Second question. I mean this is type of the questions. Sample करके. Example number 2. If see, this is rank correlation, if rank correlation, I mean Spearman rank correlation, R is equal to 0.143, it is given, and sum of square of differences and okay, and sum of square of differences, sum of square of differences, sum of square of differences between the ranks, sum of square of differences between the ranks, is 48. Okay, then find number of samples, in data. देखो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स पता नहीं, बट वी हैव द रैंक कोरिलेशन, वी हैव द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस. इंटेंशन इज दैट यूज प्रॉपर यू नो द फॉर्मूला टू गेट द आंसर. अभी देखो इसमें, आई होप, कैन यू हेल्प मी एनीवन? बिकॉज ऑफ कोर्स वी विल सॉल्व, बट जस्ट लेट मी चेक इट. लेट्स सी, आर दिया है हमको. Okay, then second, sum मतलब you know the summation of square of differences between the rank. So you know the in rank correlation coefficient R1 minus R2 is called the difference between the ranks. We have taken the square and its sum is given that 48. I mean these are the givens, and we want to find how many samples are there. So just it is applications of your formula of R. R is equal to 1 minus 6 times summation of R1 minus R2 whole square and divided by, my dear student, n cube minus n. You just see that it is a formula. So now R will become, यहाँ लिखता हूं मैं, R मतलब R दिया है, सॉरी, लेट मी टेक एज इट इज. या सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करना है.
R is given 0.143. Okay, is equal to 1 minus 6 times, but this is given 48 divided by n cube minus n, n cube minus n. तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो I think that this number will become 288 divided by n cube minus n is equal to 1 minus 0.143, and 0.143 is called 0.83 85 आएगा शायद 85 आएगा 857. I mean this is, so you can just simplify that. So your answer is simply what I can say, n cube minus n if you take to that side, and this will become simply 288, is it right, divided by 0.857. तो इसका रेशो शायद आ सकता है 336. So you will get one beautiful, the cubic equation, n cube minus n minus 336 is equal to 0. अगर ए इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो you will get n minus 7 into, see that here, n square plus 7n plus 48. I mean this is equal to 0. और अगर आपको ऐसा भी नहीं जाना है तो आपको पता है अच्छी तरह से, वी कैन गो बाय योर सिंथेटिक डिवीजन मेथड आल्सो. n क्यूब का कोएफिशिएंट इज 1, देन n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, n का कोएफिशिएंट -1, and constant is still minus 336. So I would like to take n is equal to 7, then here you will get star. तो आपका 1 कैरी हो जाएगा, 1 into 7 is 7. इसका you know that you will get 7. Are you getting? Then 7 into 7 is 49. 49 minus 1 is 48. 48 into 7, just to check that कितना आता है? How much you are getting? 336. 336, and this is 0. This is called in mass remainder. तो आपका जो फैक्टर आएगा n minus 7 into, now यहाँ देखो थोड़ा सा, आपने सिंथेटिक डिवीजन किया है, it is called your n square plus you will get 7n plus you will get 48 is equal to 0. These are the factors. Chalo, I am not recommending you can do by this one, just I am doing for understanding, but of course you can take advantage of calculator to go for the direct values. तो आपका पहला जो वैल्यू आने वाला है n is equal to 7, and second that n square plus 7n plus 48 is equal to 0, and definitely these roots will come in imaginary. These roots will come in imaginary parts. और आपको पता है samples are never into the imaginary form, or even though samples are never into the fraction. ये आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा. samples are not fractions, samples are not in imaginary, so a sample should be the real number. So what I can say that the value of n must be the 7. Value of n must be the 7. It's the answer. I hope everyone understood. Yes, sir. Good. Next question. Next question. True or false? State true or false. मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ. That notes I will share already on. I think this notes on EXTC स्टूडेंट के ग्रुप में है वो. Okay. The next question, I think third one. State but true
or false. See what is given that, see 2x plus y equal to 3 and x is equal to 2y plus 3. X is equal to, the 2y plus 3 cannot be lines of regression. Okay, we have need to check, are these, the given lines are line of regression? Is it true or false? But statement is that these lines cannot be the regression line. So now we have need to test. I have taken one question earlier. आपको cases में जाना पड़ेगा. The first case is that case 1. Let me assume first line 2x plus y 2x plus y. The first line is my 2x plus y is equal to 3 is suppose regression line. You can take any one of them, y on x. ये पहला लाइन है y on x मैंने assume किया है, तो y on x होगा, तो इसका मतलब है this line can be written y equal to minus 2x plus 3, and this implies that your byx is equal to minus 2. Okay, then let second line x is equal to 2y plus 3 is regression line now x on y. अगर पहला मेरा assumption y on x है तो second must be x on y. अब इसमें देखो directly you will get bxy is equal to plus 2. If you understand this is called negative, you can understand that this is called positive, implies that both the coefficients of the regressions are in opposite sign. So the my case 1 is a fail. This is the first case. Now second case, I just want to interchange. Now let's assume that the first line, which is already I assume y on x, now I will assume 2x plus y equal to 3 is a regression line. It could be one of the possibility x on y. अब ऐसा कंसिडर करो, अगर x on y है तो x लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, all the term should be the right hand side. इसका मतलब मेरा x is equal to, ये y उस साइड में जाएगा तो माइनस y हो जाएगा प्लस 3, but of course let me divide it by 2 to the both side. तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा कि bxy is equal to minus half. Okay, let now second line x is equal to 2y plus 3 is assume regression line, but y on x. अब y on x को करो अभी, तो your y should be left hand side, तो you will get here x minus 3 but of course divided by 2, और इससे आपको पता चलेगा आपका byx is but plus half. So this is called negative, this is called positive, and the both cases implies that your what tell me, both should not be into the different sign. So again case 2 is a fail. Case 2 is fail. Can you tell me what is meaning? Case 1 be fail रहा है, case 2 be fail रहा है. Now we don't have option now to consider the lines. Either it would be the x on y or y on x. Both cases we have done. इसका मतलब the given lines are cannot be lines of regression. Is this statement is a true or false? True. True. Very good. So your answer is a true. Very good. Your answer is a true. Good. Your answer is a true. Are you getting?
Yes, sir. Okay. Now, some questions could be the possible to ask like that way for you people. Uh, let's see. Okay. Uh, now let's see here. Some questions like this one. Next question. You can say 6, 7. I mean, I don't know that. Fifth one, suppose. Okay, see. Okay, if देखो what is given, sigma x is equal to, suppose sigma x is equal to 25, sigma y is equal to, suppose just you take example of 5. Okay, then find sorry, and r is equal to 0.5. then find then find byx and bxy. Can you tell me anyone कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? थ्योरी पार्ट थोड़ा रिकॉल करो. R into sigma x upon sigma y. Very good. So byx is equal to always r into sigma y but sigma x because y on x है. bxy is equal to r into but sigma x by sigma y. देखो आपको दो मार्क्स like the questions you will obtain easily. आपका numbers could be possible different but you will able to solve it that. Are you getting? 8.5 है, sigma y is 5, sigma x is 25, 8.5 है, sigma x is 25, y is but 5, sigma y is 5. That you will get answer. I hope, are you getting? Can you tell me answer? थोड़ा सा complete हो जाएगा question. Is it 0.1? 0.1. And this is Point 25? 2.5, 2.5. 2.5 right? 2.5. Okay, 2.5 right, correct. 0.5. आपका 2.5 आ रहा है. 2.5. Okay, no problem. I hope no need to take more questions. I hope you will understand that how to handle such a questions. Am I right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी और एक such a questions could be possible to get. See that if suppose what I'm saying, if line of regression, if line of regression y on x, ये ध्यान में रखो कौन सा लाइन ऑफ रिग्रेशन है. If line of regression y on x is given by y equal to 0.5 into x, y is equal to 0.5 into x plus you know the 3, and line of regression x on y, ये important है ध्यान में रखो, x on y और y on x is given by I mean like this is example. See that x is equal to 1.2 times of y. You know, you can say it is something like minus 10. Okay. Then find
then find correlation coefficient between them. Then find correlation coefficient between both lines. I want one student at least from your, the group, I mean team, will give me the hint or how to solve this one. It is well defined. आपको assumption नहीं करना है, वो दिया है line of regression y on x कौन सा और x on y, there is no any change. So can you tell me how we will find R, कोई correlation coefficient? So we have सर BYX बी and एक्स वाई और PXY. बी वाई एक्स मिल जाएगा, फिर आर रूट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी एक्स. Great. So can you tell me from this line, what you will get, tell me? Byx. Are you getting? Why it is Byx? Because this line is well defined y on x. Now second line is that x equal to 1.2 into y minus 10. You know this line is well defined, which is called your line x on y. जब line x on y होती है तो you know the coefficient of y is always bxy and that is well defined. I mean it is given 1.2. अभी हो गया आपका काम. You know the r is always equal to plus or minus root of the byx into bxy. You know that r is plus. Okay, r is a plus. Can we write confidently r is a plus? Yes. Yes, sir. Yes sir, Because because both are both positive. regression coefficients are a positive. कितना आता है देखो, मुझे पता नहीं. I mean 60 आएगा ना, 6 √6 आएगा ना. नहीं 0 पॉइंट आएगा रे. So 0.774. After taking root you are talking. 0.774. Yes, sir. 0.774. Oh no, this is called your R. Great, but it is plus or not minus. Please remember that. Yes, sir. Good. Now Sir, this our question will come for 2 marks. Na? हाँ, This question will come for 2 marks. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बता रहा हूँ. वो तो मैंने क्लास में लिया है ना 5-5 मार्क के बड़े, तो आई विल कम टू दैट पॉइंट थ्योरी पार्ट के लिए. हाँ, वो तो आपको बहुत बच्चों को हुआ है. फॉर एक सीसी आई विल कम टू दैट पॉइंट. Now here Okay. next question, see that one more question, but it is note, I would say. नोट करके मैं देता हूं तो so that you don't have need to solve more questions on that part. Yeah, एक थोड़ा सा नोट्स ध्यान में रखो. नोट, see if, see what I'm writing, see two regression lines suppose given to us, is it right now? So suppose if lines of regression, x or y on x, let me take as it is, suppose. So it is called the x plus by is equal to c, and second line you can say abc dx plus ey is equal to abc def f or k, suppose. Anyway, I'm talking in general. This is line of regression, but we don't know it is x on y or y on x. Second one is also the line of regression, which is maybe x or y on x. Suppose the both lines of regressions are given. If line of regression, these one are given, then mean of x and mean of y are the values of x and y after
solving both simultaneously given इक्वेशंस। देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है। इसका मतलब अगर दो रिग्रेशन लाइंस आपको दिया है, आपको मीन ऑफ द डेटा फाइंड करना है, तो आपको कैसा फाइंड करना है? जस्ट टू फाइंड, आई मीन जस्ट टू सॉल्व दिस बोथ रिग्रेशन लाइंस एंड ट्राई टू गेट योर वैल्यूज ऑफ x and y. You know it is called mean of that, you know, the x and y, mean of x and, I mean, you know, suppose for example x is given, इसका मतलब क्या होता है? सी दैट x दिया है, y दिया है, और कोई तो डेटा साइंटिस्ट ने x दिया है डेटा का, y दिया है डेटा, और कोई तो डेटा साइंटिस्ट ने उसका रिग्रेशन लाइन फॉर्म किया है, इसका मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म किया है। सो नाउ फॉर अस वी डोंट नो द एग्जैक्टली x एंड y, हाउ मेनी सैंपल्स वो भी हमको पता नहीं है, x और y का डेटा हमारे सामने नहीं है, but somebody has done work on that and they formed the lines of regression or they formed the mathematical model of the both, you know, the x and y, और हमारे पास अभी x और y नहीं है हमारे सामने, और हमारे सामने सिर्फ रिग्रेशन लाइंस है। I mean mathematical model of entire data only we have in front of us without knowing exact data of x and y, but still we could able to find how much, you know, the average of that x bar, and how much, you know, the average of that y data which was taken by someone data scientist and designed some, you know, the regression lines of that data. Are you getting what I'm saying? अरे समझ Yes, लेगा। sir. अरे सी दैट हमारे पास एक्स सी एक्स का एक डेटा होता है, वाई का डेटा होता है, उससे हम क्या करेंगे? रिग्रेशन लाइन, आई मीन मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म करेंगे। तो सपोज दिस इज द रिग्रेशन लाइन, वन इज रिग्रेशन लाइन एंड सेकंड इज आल्सो रिग्रेशन लाइन। तो हम ऑफकोर्स एक्स, एक लाइन होगी एक्स और वाई, और अनदर लाइन होगी वाई ऑन एक्स, और दैट, यू नो, द लाइंस फॉर्म बाय समवन डेटा साइंटिस्ट बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस डेटा। और अभी क्या किया है वो डेटा साइंटिस्ट ने? आपके सामने सिर्फ, यू नो, द लाइंस दिया है, रिग्रेशन लाइन, आपको डेटा नहीं प्रोवाइड किया उसने, बट डेटा के ऊपर काम करके उसने उसका मैथमेटिकल मॉडल बना के फिट इनटू द स्ट्रेट लाइन किया है, और आपके सामने ओनली लाइंस ऑफ रिग्रेशन है। वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेटा, वो हमारे पास नहीं है। तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? वो जो भी एक्स और वाई वो डेटा साइंटिस्ट के पास था, उसका एवरेज ऑफ द डेटा वी कैन फाइंड आउट। आई मीन ये जो सैंपल्स है जो भी दिए हैं, उसका एवरेज ऑफ द सैंपल एक्स बार एंड एवरेज ऑफ द सैंपल वाई बार we could able to get from only the lines of regression. How we will get it? Just you can solve both of line regression by simultaneous equation. What are the values of x and y? Are nothing but your x bar and y bar. Simple. आप उसको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो वो आपका आंसर आएगा, वो आंसर एक्स और वाई का वैल्यूज हो जाएगा। लेकिन उसको आप एक्स और वाई वैल्यूज मत मानो, यू कैन कंसीडर देम इज अ मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। दिस इज ओनली द नोट्स आई वाज गोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक लास्ट ईयर देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट ऑफ द गेट एग्जाम। I will take one example for you, you understand. See here, find means of x and y for lines of regression, for lines of regression, find means of x and y for the lines of regression. तो आप lines of regression ले सकते हैं, see that here 3x plus 4y is equal to 7, and you know the 5y minus 3x, 5y plus 3x is equal to 8. अभी सपोज लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, तो आपको मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि बोथ लाइंस वी रिक्वायर टू सॉल्व एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 7, एंड सेकंड लाइन मेरा है 3x, यू नो, प्लस 3x आ रहा है, यू कैन टेक डिफरेंट, सॉरी, या यू कैन टेक सपोज 2x, सो इट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अभी ये दो लाइन को आपको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस बोथ लाइंस, सॉल्व एंड फाइंड x and y values.
आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है, और जो भी वैल्यू ऑफ x आएगा, सी वैल्यू ऑफ x is called x bar, and what you will get value of y is called y bar. हो गया आपका आंसर। मतलब जो भी आंसर आएगा उसको x बार और y बार बोलेंगे। दैट इज द नोट आई वाज गिवन अस यू टू यू। सो डेटा हमारे पास नहीं है, बट स्टिल वी कैन एक्सट्रैक्ट मीन ऑफ डेटा बाय टेकिंग हेल्प ऑफ योर लाइंस ऑफ रिग्रेशन। आर यू गेटिंग प्लीज? Yes, sir. This very simple concept is there. Yes. Yeah. The one more thing is that, see, okay, fine. So I hope you understand this concept, which is the probably the questions of this type will come to you in the what I will say for 2 marks or the simple marks. Now I'll go to the another part is that is how to fit the data. उसका problems मैं नहीं solve करूंगा because this is just calculation part I'm leaving for you. So here the question will ask you, the very important is that is fitting of data into straight line. याद है मैंने आपको बताया था अर्लियर, फिटिंग ऑफ डेटा इनटू स्ट्रेट लाइन इज अ टू वेज, वन यू कैन फिट ऑन y ऑन x और वन यू कैन फिट ऑन x ऑन y। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा थ्योरी पार्ट हमने देखा है, we will not little bit follow that theory part, we will go by different approach to fit this data. तो I mean हमारे पास x दिया होता है, ठीक है, हमारे पास x दिया होता है, y we have given, और हमको एक डेटा का मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, बट ऑफ कोर्स वी हैव नीड टू फिट द डेटा इनटू द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में हमको डेटा फिट करना है। नाउ देयर आर टू वेज टू डू दैट, one is called fitting of data on a straight line but y on x, and one is called x on y. So now I would like to go to the first case. See the case one, I mean okay, ठीक है, case one I would say, see that is called regression line but y on x, थोड़ा ध्यान दे दो, y on x। तो हमने बताया था कि y on x होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में y आता है, राइट हैंड साइड में x आता है, बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट होता है एंड y इज डिपेंडेंट होता है। एंड आई थिंक दिस इज द थिंग्स आई एक्सप्लेन हियर, शायद एक्सप्लेन किया है ना मैंने, हाँ। रिग्रेशन लाइन देखो यहाँ, या y on x, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं तो यू विल कम टू नो दैट आफ्टर यू नो द टेकिंग दिस हेल्प ऑफ द ब्यूटीफुल इक्वेशन और ब्यूटीफुल फॉर्मूला, ये जो बहुत बढ़िया फॉर्मूला द डिराइव किया है, अगर इसका हम हेल्प लेते हैं तो इसका मतलब वी शुड नो r, वी शुड नो सिग्मा y, वी शुड नो द सिग्मा x, वी शुड नो x बार y बार, then we will come to know that this regression line y on x and that nature will look like y equal to, अगर आप लास्ट में देखते तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, लास्ट का जो हमारा नेचर ऑफ द लाइन होता है y इक्वल टू by(x) into cx plus c1, इसका मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन, this is one of the straight line where x is independent, y is dependent, और आपका at the end solution would be look like this one. Now let me catch this point. तो now थोड़ा सा हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे यहाँ, see that we will do the reverse process. या तो यहाँ क्या हो रहा है, रिग्रेशन लाइन y on x है, अगर आपको x दिया है, y दिया है और आपका फिट ऑफ द डेटा y on x करना है, तो माय स्टेप वन, in many classes it was given except I think one batch of EXCC. So now let's see here the step one. Step one क्या है, देखो assume करना है आपको, assume I mean your assumption is that your solution. तो what you are doing, regression line y on x करना है, तो स्क्रीन हाँ लैग हो प्लीज, रहा है। हाँ क्या हो रहा है प्लीज, सर लैगिंग हो रहा है। ओहो लाइकिंग हो रहा है, जस्ट 1 मिनट, कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? Yes, sir. दिख रहा है screen. यस सर, हाँ सर। Yes, sir. ओके, लाइकिंग हो रहा है,
सो मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा. आई मीन आर यू फेसिंग ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और ओनली few ऑफ यू? No, sir. No, sir. No, sir, no problem. No, sir, we are not facing that problem. ओके ओके ओके, तो शायद उसके आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा. ओके Okay, sir. Okay. ओके, शैल आई कंटिन्यू? या Yes, Yes, sir. sir. तो सी इसमें क्या करना है, देखो एज्यूम करना है. क्या एज्यूम करना है आपको कि लाइन रिग्रेशन y ऑन x कैसे होना चाहिए? y शुड बी इक्वल टू ax प्लस b. यू नो, इन जनरल आई एम टॉकिंग. तो आपका जो फाइनल आंसर वुड बी लुक लाइक दिस वन. तो आपका a होना चाहिए by(x) सिंपली. मतलब a इज इनडायरेक्टली हम बात करें, a आपका जो है, this a is indirectly your by(x). now this is called your assumption, let me call 1. अभी हमको डेटा आपका जो फीड करना है वो ऐसा दिखना चाहिए. आई मीन योर आंसर शुड बी लाइक लुक लाइक दिस वन. तो अभी a और b दो अननोन है इसमें. अगर दो अननोन इसमें है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए. and to get two equations, see that I would like to go to the step 2. थोड़ा ध्यान दो यार. It is common for the regression line x on y. तो हम पहले क्या करेंगे, we want to take summation. We want to take summation means this, to both side of equation 1. Both side of equation 1. तो equation 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? Summation of y is equal to a is a constant. I will take summation of x because it is variable. Now यहाँ थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है. b is a constant always और मुझे summation लेना है, तो b can be written b into 1. b can be written b into 1, तो 1 का मैं summation ले लूंगा. अभी 1 का summation in statistic is called number of sample. So where I would say that summation of 1 is always equal to number of samples. It is called number of samples. It is called number of samples. So now this equation will look like summation of y is equal to a times summation of x but plus n times b. And this equation is very important for us. Let me say equation number आपको suppose start from 1. Okay, can you able to get this the result? आपको क्या दिया है? x दिया है. आपको क्या दिया है? y दिया है. तो you will find here summation x, you will find here summation y. देखो लास्ट में. So the both results you will get it. तो आपको a इक्वेशन मिलेगा. समेशन x से आप पुट करो, n तो आपको पता है, समेशन y पुट करो. So entire equation will come in ab form. Like next step, अभी मुझे दूसरा स्टेप लेना है because I want one more equation. There are two unknowns and two unknowns always require two equations to get the results. तो अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है. Step 3 is that, see, please remember this, multiple by independent. अभी मैं जानबूझ के और purposely I want to focus on that independent variable से multiple करना है. Now in this assumption regression line y on x है. देखो y on x है तो आपका राइट हैंड साइड का इंडिपेंडेंट है, तो x से मल्टीपल करना है. तो मल्टीपल बाय x to equation 1 and then take summation. उसके बाद में summation लेना है. So if you multiple this equation 1, देखो you multiple this equation 1 by x and take summation. अगर 1 को x से मल्टीपल करते तो थोड़ा 1 के ऊपर ध्यान दे दो. y into x is xy is equal to a into x is ax square and b into x is x bx. अभी इसका समेशन लेना है. तो समेशन ऑफ योर xy is equal to a times summation of your x square plus b times summation of x. So आपका और एक इक्वेशन मिलेगा, that let me say double star.
और अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहां मैं लिखता हूं x और y दोनों भी हमको दिया है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं, ओनली कैलकुलेशन पार्ट विल रिमेनिंग, दैट आई होप यू विल डू इट। x और y देखो, x और y आपको दिया है, तो आपको समेशन ऑफ x फाइंड करना है, आपको समेशन ऑफ y फाइंड करना है। इट इज टेम्पलेट यू कैन से। अभी आपको क्या चाहिए इक्वेशन स्टार में, समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए, दैट वी विल गेट इट फ्रॉम हियर। नाउ इन इक्वेशन डबल स्टार में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब मुझे दो कॉलम ऐड करना पड़ेगा, वन इज एक्स स्क्वायर एंड वन इज एक्स वाई, और यू कैन गो एट एन टू गेट इट समेशन। और आप देख लो, अगर ये आपको रिजल्ट्स मिलता है लास्ट में समेशन, देन यू कैन पुट इन इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार एंड सॉल्व देम। स्टार और डबल स्टार में आपको पुट करके सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, put values of summation x, summation y, summation x square and summation xy in star and double star and solve to get a and b values। आपको अगर सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को ये, तो आपको ए और बी का वैल्यूज मिल जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज दैट स्टेप नंबर 5, put values of your a and b in final equation 1। जो भी आपको ए और बी का वैल्यू मिलता है वो इक्वेशन 1 में डालो। आपका इक्वेशन 1 इज कॉल योर a टाइम x प्लस b, a times x plus b। So indirectly it means that you will get y equal to byx into x plus, यहाँ b है तो b लेता हूं मैं, b। So this is called your indirectly a, and this is called the line which is called regression line, but y on x। तो आपको ये चार ही कॉलम, दो ही कॉलम ऐड करना है, एक्स और वाई तो आपके पास है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है, जस्ट टू पुट रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट्स, सॉल्व दिस बोथ इक्वेशंस टू गेट योर ए एंड बी। आई होप आर यू गेटिंग, समझ रहे क्या? यस सर। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज दैट, सी अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि फिट द डेटा इनटू द स्ट्रेट लाइन, इज इट राइट, y on x and find y at x is equal to 40। can you tell me what is meaning of that? आपको रिग्रेशन लाइन y on x फाइंड करना है और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा एडिशन क्वेश्चन दिया है, यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट y हाउ मच फॉर x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये जो हमारा लास्ट दो सॉल्यूशन आता है, ये सॉल्यूशन में मुझे x का वैल्यू 40 करना है, and then let me know how much my y corresponding to that 40 results, that is called your prediction for x is 40, how much y is there। are you getting? समझ रहे? Yes, sir. Okay, good। now second case, अभी same way, case 2। now regression line, see regression line, but y on x हो गया, now x on y, x on y। अभी x on y का मतलब होता है, यू कैन जस्ट गो बाय दिस वे। सो नाउ आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में x आएगा, राइट हैंड साइड में y आएगा। तो माय एज्यूम्पशन, नाउ सी लेट मी स्टार्ट विद एज्यूम। फर्स्ट स्टेप एज्यूम रिग्रेशन लाइन x on y is x is equal to a times y plus b। आई मीन आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, this is called equation 1। Answer should be look like this one। now step 2,
अभी स्टेप 2 में हमको क्या करना है, समेशन लेना है। टेक समेशन टू बोथ साइड, देखो वही किया है मैंने। तो यू विल गेट समेशन ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स समेशन ऑफ y प्लस b टाइम्स बट समेशन ऑफ 1, बट समेशन 1 हमेशा n होता है, तो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू a times summation of y, but it is n times b, and this would be the my another star equation. Now second star equation to get, I want to multiple by independent variable. कौन सा independent variable है, can you tell me? Y. So X1. multiple by y to equation 1. तो आपका n take summation, and take summation, तो आपको इक्वेशन 1 को y से मल्टीपल करना है। देखो आपको xy मिलेगा, देन a इंटू वाई है, बट अगर y से मल्टीपल किया तो y स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू वाई आएगा, b इंटू वाई। सो आई मल्टीपल इक्वेशन 1 by y, and of course I would like to take now summation. Take summation. So let me take summation of xy. A is a constant. Let me take summation of y square and b into summation of y, and this is called my double star. अभी आपको ए स्टार और डबल स्टार को सॉल्व करना है। स्टेप 4, फाइंड समेशन x समेशन y स्क्वायर and summation xy. Okay, and put in star and double star. स्टार एंड डबल स्टार में पुट करना है, देन solve both equations to get, to get a and b. And the last step, once you get a and b, then put your values of a and b in your equation 1. So your equation 1 now, x is equal to ay plus b. आपको a और b का वैल्यू पुट करना है यहाँ, but you know now a can be nothing but bxy into y plus b. तो आपका a आपका हो जाएगा byx, and this is called the regression line, but you know the x on y. I hope, are you getting? Yes. Hello. Yes, sir. Yeah, then I will go to the last one, and then we will see one questions calculation आप कर सकते हैं, that is that. तो ये theory part हो गया. Now one more thing is remaining. Similarly, I would like to go. This is called the fitting of data, but in parabolic form. This is method. I mean next, the type. Method 2, fitting of data in but parabolic form or parabolic curve. So this is another the part of syllabus, like you can fit the data into the straight line or parabolic curve. Parabolic curve को भी बोलते हैं fitting of data in second degree curve. Second degree curve. Fitting of data into second degree curve मतलब parabolic, because parabolic का जो equation होता है वो second degree में आता है. Second degree, what is parabolic equation? Y equal to 4 times ax square. Am I right now? That equation. So what I will do here, we are going to assume. अभी थोड़ा सा ध्यान दे दो यार. Okay, see here. So the first, the step 1, we are going to assume, solution आपको कैसा चाहिए, parabolic form में चाहिए. Parabolic means what? The quadratic form, second degree में. So let me assume
parabolic curve of given data, parabolic curve or second degree curve of given data is as y equal to, in quadratic form, ax square plus bx plus c, and this is called the parabolic curve. This is called second degree or it is called parabolic curve. So let me call one equation. अब इसमें तीन अननोन है, तो तीन अननोन फाइंड करने के लिए हमको तीन इक्वेशंस लगेंगे. We require to get three equations. ओके, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ. इसमें एक लेट मी टेल यू. कैन यू टेल मी हियर, ये दो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको समेशन एक चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन वाई स्क्वायर चाहिए और समेशन एक्स वाई चाहिए. प्लीज रिमेंबर, जब हम ए रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करते हैं तो हमको समेशन एक चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए. आई मीन समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स वाई, ये जो तीन फैक्टर है वो रिग्रेशन लाइन y ऑन x में भी आते हैं. देखो समेशन x आ रहा है, समेशन y आ रहा है, समेशन एक्स वाई. अब अगर यहाँ भी बात करते हैं रिग्रेशन लाइन x ऑन y में, तो आपको समेशन एक चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई. मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है. हम हमारे पास दोनों जो फैक्टर है वो समेशन एक, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, तीन दोनों में भी हमको लगती है, तो दैट वी कैन फाइंड इट. आई मीन इट इज कॉमन टास्क. ओनली जो एक्स्ट्रा जॉब है वो समेशन वाई स्क्वायर लेना है इन दिस केस, और अर्लियर केस में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है. देखो यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमको समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, एक्स वाई भी मिल रहा है. सो आई वुड लाइक टू द राइट वन मोर कॉलम ऑफ वाई स्क्वायर. बस हो गया इतना काम. तो मतलब हम एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए हमको, वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए और एक्स वाई का कॉलम चाहिए. सो दीज आर द कॉलम्स आर इनफ. दिस इज वन कॉलम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, बिकॉज ये तो दो कॉलम हमको दिया है. तो these three columns if you generate, then you could able to find regression line y on x and y. Both lines can be possible to find out from the same data. Just you are the adding three columns there. X square चाहिए, y square चाहिए, x y चाहिए बस. So so we will find out the the regression line x on y, y on x in only the one process, एक में, by adding one more extra column is there, y square का. Now let's come here. Parabolic curve है, तो now my second step. What is second step? See that I would like to take summation to the both side. हमने जो earlier किया है वही करना है. Take summation to both side. तो आपको क्या मिलेगा? सी समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू आपको मिलेगा समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू आपको मिलेगा समेशन x प्लस c इंटू आपको मिलेगा समेशन ऑफ 1. बट समेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू n. तो यू विल गेट दिस रिजल्ट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर plus b into summation of x, but it is n into c, and this is the my one equation which I require to find, star 1. now इसमें आपको क्या क्या लेना है? see that here हमारे पास x है, हमारे पास y है. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x और y हमको दिया है फॉर एनी डेटा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम की बात कर रहा हूँ. इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा. x दिया है, y दिया है, तो ऑफकोर्स यू विल गो फॉर समेशन x. ऑफकोर्स एट द एंड यू विल फाइंड समेशन ऑफ y. चलो ये दोनों हमको मिल गए. आपको क्या चाहिए ना? समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए. देखो तो यू हैव टू नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर कॉलम, और आपको यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर लेना है. तो आपको इंटायर इक्वेशन यू विल गेट, बट इन टर्म्स ऑफ एबीसी. n मतलब नंबर ऑफ सैंपल, वो तो आपको पता होगा. तो नाउ इंटायर इक्वेशन विल कम इन एबीसी फॉर्म, बिकॉज समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर वी विल प्लग देयर. नाउ लेट मी गो टू द स्टेप 3. अभी स्टेप 3 में क्या करेंगे? वी विल मल्टीपल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कैन यू हेल्प मी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? X. x. So multiple by x
to equation 1 and take summation. You know the same concept. Let me follow what I did into the regression line x on y or y on x. Difference is only that रिग्रेशन लाइन थे वो लीनियर थे और पैराबोलिक कर्व क्वाड्रेटिक है, इतना ही फर्क है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है, बाकी सेम प्रोसीजर इज देयर है, कॉलम भी सेम चाहिए आपको, सी दैट। नाउ यहां मैं मल्टीपल बाय एक्स करूंगा, थोड़ा ध्यान दे दो, एंड देन आई विल टेक समेशन। तो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय एक्स एंड वांट टू टेक समेशन, तो y into x will become xy, ओके, इज इक्वल टू, हमको x से मल्टीपल करना है, तो दिस टर्म विल बिकम a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, हमको एक्स क्यूब मिलेगा वहां, प्लस b इंटू एक्स, बट x विल मल्टीपल बाय x, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, एंड c इंटू आई विल मल्टीपल योर x, यू विल गेट योर x। देखो what I did, I multiple by x to the equation 1 and now I would like to take summation. So take summation of this term, take summation of that term, summation of x square and summation of x, and now my dear student, this is one more star equation, so it is double star. अभी देखो आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास है, समेशन एक चाहिए वो भी मेरे पास है, देखो समेशन एक्स क्यूब चाहिए, तो यू कैन टेक योर एक्स क्यूब कॉलम, यू कैन टेक एक्स क्यूब कॉलम। ओके, और क्या चाहिए आपको, समेशन एक्स वाई चाहिए, तो यू कैन टेक समेशन एक्स वाई, यू कैन टेक एक्स वाई, so this is called summation xy, ये आएगा, I will tell you this column. Now this is the second equation, because one star is one equation, एक equation मिला, एक equation मिला, लेकिन हमको तीन equation चाहिए because three unknown है। So now I will go to the same way for the third step, I mean next step, same way, see, like step 4. So what I will do, I will multiple बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से तो मल्टीपल कर चुका हूं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीपल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे ही मल्टीपल करना है, बट रादर देन x आई विल मल्टीपल बाय x स्क्वायर टू इक्वेशन 1 एंड देन टेक समेशन, विच इज वेरी सिंपल, x की जगह हम x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, तो नाउ सी, इफ आई मल्टीपल x स्क्वायर टू द इक्वेशन 1, then you will get x square into y is equal to, मल्टीपल दिस इक्वेशन 1 by x स्क्वायर, तो आपके पास a है, आपके पास x स्क्वायर है, लेकिन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर विल बिकम x रेज टू 4 प्लस b इंटू ओरिजिनल x एंड x स्क्वायर, इट विल बिकम x क्यूब, and c into what I will get x square, because I am multiplying by x square to the both side, and the finally you want to take sum, अगर हम इसका सम लेते हैं, so you can take summation of x square y, summation of x square, summation of x cube, and summation of x square, and this is called one more my equation, so it is called the triple star. अभी देखो इसमें क्या चाहिए, आपको समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ मिल रहा है आपको समेशन एक्स क्यूब चाहिए, वो भी यहाँ मिल रहा है, आपको समेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 चाहिए, इसके लिए कॉलम मैंने रखा था, आई वुड लाइक टू टेक एक्स रेज टू 4 कॉलम हियर द सीक्वेंसली, तो यू विल गेट समेशन एक्स रेज टू 4, एंड फाइनली व्हाट आई रिक्वायर्ड समेशन बट एक्स स्क्वायर वाई, तो आपको यहाँ एक कॉलम को ऐड करना है एक्स स्क्वायर वाई, आपका एक्स स्क्वायर यहाँ है, वाई यहाँ है, तो जस्ट यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ कॉलम, यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई हियर, जस्ट टू चेक इट, यह आएगा, एंड देन यू टेक समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, if you take the summation of the all columns at the end and if you put in equation star, double star and triple star, और अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा, put
or I would say the solve better. Okay, solve. See, solve equations star, double star and triple star. You know how you solve this equation by calculator? ये तीन equation में तीन unknown है, so you can select the linear equation of three unknown, three variable, put corresponding values in within, you know, the 1 minute, 2 minutes, you will get answer from the calculator. Solve equation star, double star and triple star, and to get values of a, B and C. and अगर आप एक बार आपको ये values मिलता है by calculator, the next step you can replace all values in final answer, put A, B and C in equation 1. So equation 1 is y equal to a times x square plus b times x plus c, and you know this is called your final answer. You know it is just repetition like earlier linear regression line y on x and x on y. इसमें इतना ही फर्क है कि आपको तीन इक्वेशन लेना पड़ेगा, तीन इक्वेशन लेना पड़ेगा एंड तीन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी है, यू कैन सी दैट, बट इट इज नॉट टू मच लेंदी, सी दैट व्हाट वी कैन से 10 मार्क्स को भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. So if you solve this question, you could able to get 10 marks directly. I hope, are you getting? Yes, sir. Is anyone have a problem? अभी आपके पास सिर्फ डेटा मुझे डालना है, बाकी कुछ नहीं, and the calculation you can do it. Now instead of solving the questions, you know, separately, assignment 2 is already given to you. So you will get practice of assignment 2 to find out, you know, the parabolic curve of given data, to find out regression lines of x on y or y on x of the given data, what I have given, you know, the questions to you. You can just go through the assignment, so you will come to know that. And it is enough. ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्या हो जाएगा, आपका x और y का वैल्यू कुछ तो डिफरेंट आएगा, but you know whatever values are given, you just go for by same template and try to solve this, you know, three equations to get 10 marks from that. Are you getting? Yes, sir. Okay. Is anyone have doubt? Let me know. किसी को डाउट है? Sir, can you solve one example for a Good. demonstration? For which Parabolic. one? Parabolic के लिए. Good. Can we take the same example which was the part of your assignment? Yes, sir. हाँ? ठीक है, नहीं तो एक एग्जाम्पल मैं सैंपल करके लेता हूँ. गुड, दैट इज नो डाउट. यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल एज अ सैंपल एग्जाम्पल. यू नो, सी, आपको रिग्रेशन लाइन का तो इजी लगेगा ना, नो प्रॉब्लम. हेलो. Yes, sir. ओके, गुड. अभी पैराबोलिक का देखो, फॉर एग्जाम्पल सी दैट question could be like this one: fit a second degree data, so second degree curve, second degree curve. मैं जानबूझ के second degree बोल रहा हूँ, it means parabolic curve. Are you getting? Okay, Yes, sir. sir. fit second degree मतलब parabolic curve. fit second degree curve of following data. चलो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, for following data. Is it right? and find y for and find y for x is equal to, suppose you know the 30, and find y, you can predict y for x is 30, but of course you should know that equation first. So now here x is given, theory part देखो अभी उस हिसाब से I would like to go. See, x is given to us as well as y is given to us.
ओके, x इज गिवन एंड y इज गिवन, तो x क्या है देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स सी 20, then 30, then 40, then 50, then 60, then 70, then 80, then 90. Fine. Now see that the data is given, suppose, and then another data what we have, let's check it, is that suppose 20, suppose 60, suppose 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, like that way. Now this is, we want to fit this data but in parabolic form. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. ओके, तो अभी देखो, जब हम पैराबोलिक की बात करते हैं तो यह थोड़ा सा मैं आई विल राइट हियर. So what is my, I required three equations to solve. The first equation, second equation and third equation. What is first equation? See that here. So my first I will say solution. Assume parabolic curve means second degree curve. See, parabolic curve is y equal to a time x square plus bx plus n. This is my answer. अभी मुझे इससे तीन इक्वेशन मिलने वाले. हम क्या करेंगे, जस्ट टू सी व्हाट आई डिड इन द अर्लियर. पहला जो चीज है तो हम क्या करेंगे, उसका समेशन ले लेंगे. सी, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस b टाइम्स समेशन ऑफ x plus c times summation of 1, which is called n times c. Okay, this is my one equation. सेकंड इक्वेशन, अभी यहाँ हम क्या करेंगे, ए इक्वेशन को x से मल्टीपल करेंगे और समेशन ले लेंगे. अगर मैं मल्टीपल x से करता हूं तो यू विल गेट एक्स वाई, बट लेट मी टेक समेशन इज इक्वल टू, अभी यह देखो, a टाइम्स समेशन ऑफ व्हाट आई विल गेट हियर, x से मल्टीपल किया तो एक्स क्यूब, समेशन ऑफ x से मल्टीपल किया तो x स्क्वायर, and c into I will get summation of x. So this is suppose my second equation. And third equation which I required, आप क्या करेंगे, x square से मल्टीपल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, x square into y but summation. Now a into x square and x square x raised to 4, b into summation of x into x square x cube, c into, I'm talking about a equation को, c into x square, so you will get summation of x square, and this is third equation. अब ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू पुट करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स. मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट अप करना है. आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू हियर, प्लीज रिमेंबर व्हाट वी कैन से. यह आपको x का वैल्यू क्या चाहिए, आई मीन एक्स स्क्वायर चाहिए. Then I want x cube. Then I want, sorry, x raised to 4. Then I want xy. And then I want x square y. ये चार इतने कॉलम्स मुझे चाहिए, इसके कॉलम चाहिए. आर यू गेटिंग? Yes, sir.
Yeah. Now you can just go for your 10 ka square, 100, 200 ka square, 400, 900, 1600, 2500, 36, this one. नाउ ये मैंने पर्पसली ये नंबर सर बिकॉज आप इजीली बिकॉज मुझे नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था कैलकुलेटर के ऊपर. आर यू गेटिंग? हेलो. Yes, Yes, sir. sir. मैंने ये नंबर ऐसे लिए कि बिकॉज आई कुड गो विदाउट कैलकुलेटर. अभी विदाउट कैलकुलेटर जा रहा हूँ मैं. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. लेकिन ये मुझे नहीं आएगा अभी. ये समेशन एक्स स्क्वायर नहीं आएगा. यू कैन डू एज होमवर्क जस्ट टू अंडरस्टैंड. समेशन वाई चाहिए मुझे, समेशन एक्स भी चाहिए. So summation X is 450, summation Y is 780. 1 minute है. 450 ना. Yes, ओके. sir. समेशन वाई 780. 780. गुड. एक्स स्क्वायर 28,500. 20. मुझे इसमें जगह नहीं है. कैन आई राइट हियर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट 28,000. 500. ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं. नाउ गो फॉर एक्स क्यूब एंड गो फॉर एक्स रेज टू 4. Yes, sir. तो एक्स रेज टू 4 मुझे थोड़ा एक्स क्यूब मतलब आई कुड से इट इज 1000. इज इट राइट? X square into Yes, X, sir. it will become the 4 into 2, 8,000. Am I right na? Yes, sir. Yes, sir. 900 into 30, 9,347. 2,700. हाँ, मतलब मैंने जानबूझ के ए नंबर्स लिए so that you will understand that how to do it. Am I right? और टाइम Yes, है sir. उससे बिकॉज अगर मैं रैंडमली लेता था ना तो कैलकुलेटर मेरा कैलकुलेटर से टाइम लगता था आपको भी और मुझे भी. बट यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर इज ओनली बिहाइंड द पर्पस. देन 8 into 4, 32. सॉरी, ये गलत हो गया. 64. हाँ करेक्ट, ये गलत हो गया. मैंने इससे मल्टीपल किया. ओके, वेरी गुड. 125. ये कितना आ रहा है? 64 आएगा ना. और 3 शून्य. करेक्ट. 25 into 5, 125. 125. बट उसके ऊपर 3 शून्य जीरोस. 6 into 36 into 6, 216. 216. 216. Correct. Then 7 into 49. इसका 343. 343, 3 zeros. And then 512. 512, 3 zeros. And then 729. 729 0. और इसका आप सम ले लो. सम Yes. ऑफ एक्स क्यूब मतलब यहाँ ही ले लो. तो मेरे पास ज्यादा जगह नहीं इसलिए. हाँ. आर यू गेटिंग? Yes, sir. 10 मार्क का क्वेश्चन है Yes, सपोज sir. आपके लिए तो इजी है ना. एक दैट इज. देन यू कैन डू एक्स रेज टू 4. तो एक्स रेज टू 4 आएगा आपको जस्ट टू एड इट लाइक दिस. ओके. Yes, sir. Yes, sir. 16 आएगा. 9981. 81. 4 zeros. Am I right? Yes, sir. 16, 4 zeros. 25 means 625. Sir, 4 का 256 आएगा. 4 का ये क्या? हाँ सर. अरे हाँ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. करेक्ट. करेक्ट. 256 आएगा. ठीक है, मैं वही लिखता हूँ. क्या इसमें जरूरत नहीं हो रहा है. ओके. ये 2
56. Okay, then this. Now 36 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? 1296. 5 1296. 1296. Then 2409. 2409. Okay, and then 64 into 64. 4096. 4096, and then 40, and the last one 81 into 81. 6561. हो गया. यही कॉलम आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा x raised to 4 का. So you know this machine will do easily x raised to 4. कितना आ रहा है इसका सम? x cube और x raised to 4 का. So 1 minute. Meanwhile some student can do the rest of column x into y. x into y भी हम कर सकते हैं. This is called your 200. Then 6 into 2 12, 100. 3 into 7, this is. Then 8 into 4. I mean मैं तो ओरली कर रहा हूँ. ओरली भी हम 10 मार्क ले, मतलब ऐसा इसलिए क्वेश्चन लिया है मैंने. ऐसा ही सेम आप कैलकुलेटर से करो. 45, 6077, 96, 117. ये हुआ एक्स वाई. तो समेशन ऑफ एक्स वाई ले लो. Summation of x cube is हाँ 2025 20, 25 and 3 zeros. and 0. 3 zeros. Okay, fine. Like similarly you can do x raised to 4. वो तो आप करेंगे. Let it be x square into y करो थोड़ा. X square into y, x square into y, you know here 30 आएंगे. X square into y 24, again 30. सर हाँ बोलो. 70 का मतलब 4 टाइम्स उसका ये करेंगे तो 2401 आएगा ना. 2401 आएगा. 2404 दी. Where you are talking? 1 1. नहीं, you are talking about which column? सर x4 Sir, x raised to 4 का कॉलम. x raised to 4 में कॉलम में कौन सा रो? 70 का 7. 70 का ना. ओके, तो ये 70 का रो x raised to 4 में, मतलब 4900 का स्क्वायर की बात करें ना. 5th कॉलम. 5th कॉलम ये 2401. 2401 है क्या? 9 की जगह 1 है क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है. या बट योर सम इज सेम ना. ओके. एक्स स्क्वायर इंटू वाई में कर रहा था. यहाँ मुझे 30 आएंगे. देन 90 इंटू 25 आएगा. 225 आएगा ना ये. Yes, sir. और उसके ऊपर 3. ओके. देन 36 आएगा, लेकिन 4 0. देखो मैं विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ. आई होप यू विल डू मोर देन बेटर बाय कैलकुलेटर. देन 49, 539, बट स्टिल 40. अभी 768. 7
68. 68. Then 1053. 1050. 53. 4 5 3. 1053. Okay, 53. Okay, fine. Now you can do just summation. So summation of x raised to 4 column is 15, double 3, double 0, double 0. Fine. And Triple 3, sorry. Sir, one more 3 is there. one more 3. Okay, fine. Good. And xy? 46200. 4 4. 6200. Okay. And the last one? 312600. 3 1 26 6. 000. Abhi, now see here, these values we are going to put here. तो अभी इसमें मैं छोटा सा थोड़ा करके okay ठीक है, I will take this one. See now let me go for this case. Summation y मेरे पास है 780 is equal to a into summation x square है 2850. तो 28500 is summation x square into a plus b into summation x 450 है देखो 450 into x and lastly n into c. n कितना है 9. 9 into c. You know this is my one equation. Of course in abc सर बी ये b आएगा ना इधर b आएगा उधर बिकॉज समेशन x हमने लिखा है वहां. Like similarly just to put the rest of results. Yeah. अभी ये इक्वेशन में देखो अभी समेशन एक्स वाई हमारे पास है 46200 इज इक्वल टू नाउ समेशन ऑफ एक्स क्यूब हमारे पास है 2025000 इंटू ए प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर 2800 इंटू बी एंड समेशन ऑफ एक्स हमारे पास है 450 into c. So this is one more equation. And one more we will get it. Summation x square y 3126000 is equal to then a into x raised to 4. x raised to 4 है that is 5333. Is it right? Into a plus x raised to cube by 2025000 into b and then finally summation x square है हमारे पास 28500 into c.
अभी एक इक्वेशन मिल गया. नाउ जस्ट यू रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. जब आप सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा आप इसमें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. सी दैट अगर आपको इक्वेशन बहुत बड़ा लग रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन. अभी चलो ये इक्वेशन की बात करेंगे. तो यू नो हियर क्या है, 0 0 2 है या 0 0 2 है. आई मीन मिनिमम 2 zeros कैन बी एलिमिनेट. तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा 3 1 2 6 0 0 इज इक्वल टू 1 5 3 3 3 ओनली 0 0 प्लस ए इक्वेशन होगा 2 0 2 5 बट ओनली 1 0. बट ए इक्वेशन हो जाएगा 285 इंटू सी. जस्ट आई डिवाइडेड बाय 100 सिंपली. 2 जीरो मैंने कट किया इक्वेशन से, तो आपका इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा. लाइक सिमिलरली यू कैन आल्सो डू दिस इक्वेशन. ए भी इक्वेशन हम थोड़ा सा 10 से कम कर सकते. 4620 इज इक्वल टू 2025 बट डबल जीरो प्लस 285 बट जीरो एंड प्लस 45 इंटू सी. आई मीन ये भी इक्वेशन हम कम कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 10. दिस इक्वेशन आई मिनिमाइज बाय डिवाइडिंग 100. So now you have the three equations. Just to solve it by calculator by putting the three x y z SI variables. So you will get ABC values. I hope are you getting? Yes, sir. So I hope may you will Sir. can you A is equal to कितना आ रहा है? Minus 0.02 है sir. Minus 0.02. Okay. B 3.277. 3.27. आपको कैलकुलेटर से just you want to put up the corresponding figures, you will get that. And C is equal to Minus 11.428. minus 11.428. Okay, fine. So final answer देखो अभी final answer is y equal to a time x square plus b time x plus c. तो इसका मतलब है this is minus 0.02 into x square b plus a. So it is plus 3.27 into x and c is minus 11.428. This is called my the final answer. Don't worry अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गलती होता है doesn't mean that you are wrong. You will get full marks about this. The way of solving is very important. And now one more question is given that find or predict your y for x is equal to suppose 30. You can take any value. Doesn't mean that only 30. It could be anything. So x, when x is 30, you can go for y. So y is equal to simply you will get minus 0.02 into x, but x is 30 square, plus you will get 327 into x, but x is 30 minus 11.428. Simply this is called your y for x is equal to 30. Are you getting? Yes, sir. Sir, y is equal to 68.675. 68.675. 675. 68.675. Yes. So 672, sorry, not 5. 672, not 5. Okay, 672. ठीक है. अभी just you listen in 10 minutes. इसके लिए अगर I mean somebody will say that sir थोड़ा सा थोड़ा calculation थोड़ा बढ़ रहा है. This is the standard process to do that. Are you getting what I'm saying?
Yes, sir. हाँ, इसके लिए एक छोटा सा सिंपलेस्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यू कैन डू इट, बट और इवन दो वी कैन डू इट, सी दैट अनदर वे। मैंने पर्पस जो दिया है बिकॉज इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, बट एनी वे यू कैन सी दिस इज वन मोर अप्रोच, लेट मी गो। सी एक्स इज गिवन, वाई इज गिवन, एम आई राइट ना? एक्स और वाई दिया Yes, है। sir. अभी देखो आपका इसमें 50% थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा जरूर। तो एक्स शायद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 था। कैन यू हेल्प मी फॉर वाई? Sir, हाँ बोलो ना sir, is बेटा। it always necessary to divide by 100, or we can divide by 1000 as well to simplify the equation? या वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां करने से अच्छा यहाँ मैं बता रहा हूँ दैट वी कैन डू इट। कैन यू टेल मी वाई? Sorry? वाई 20, हाँ 20, 60, ओके 70, हाँ 80, गुड 90, हाँ 100, ओके 110। 110, 120 and 130. हाँ मैंने ऐसे ही लिया था ना डायरेक्टली, ठीक है। अभी सी दैट, थोड़ा ध्यान दे दो व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट इज द रिग्रेशन लाइन? y इज इक्वल टू a टाइम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आर यू गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? This is Yes, your sir. original, sorry, your original regression, I mean parabolic line, original, this one। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा दिया है वो थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। सो व्हाट आई विल डू नाउ हियर, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं तो यू विल कम टू नो दैट माय एक्स बार विल बिकम, एक्स बार की बात कर रहा हूँ, लाइक समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, लाइक दिस वन। तो आई थिंक यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये 50 आना चाहिए, एम आई राइट? ये देखो ना, इसके ऊपर 4 है और नीचे 4 है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो अभी देखो आपका 50 है, और यू कैन चेक ना, अर्लियर समेशन एक्स बाई 9 किया तो आपको 50 आता है। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, सी, ये थोड़ा सा ध्यान दे दो इसमें। जैसे हमारे पास इसमें एक स्कोप है, इसलिए आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज इट यू विल डू लाइक दैट वे, बिकॉज इसमें स्कोप है एग्जाम्पल में। तो व्हाट आई विल डू हियर, माई कैपिटल एक्स आई वुड से, कैपिटल एक्स, small x, capital X is equal to what I will say here, small x minus x bar। एक कैपिटल X की मैं बात कर रहा हूं अभी, कैपिटल X I will say small x minus x bar। How much you will get, tell me here? See for example 10 minus 50 कितना आता है? -40, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Then 20 minus 50 कितना आता है? -30। Minus So, I 30. mean they will come in 10 form, so let me divide also 10। देखो आपका आई मीन ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। सो नाउ इस केस में सपोज लाइक दैट, तो नाउ सी हियर माय एक्स बार इज 50, तो 10 minus 50 is 40 divided by 10, it is just -4। now 20 minus 50 by 10, it is -3, then you will get -2, you will get -1, and you will get 0, you will get 1, you will get 2, you will get 3, you will get 4, am I right? Yes, sir. या अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल x है एंड स्मॉल y है, इसको हम डील नहीं करेंगे, मतलब y we will keep as it is। so now what I will do here, I will take summation of but capital X, summation of capital X करेंगे। are you getting? yeah, now what I will do, see capital Y is equal to my small y
डिवाइडेड बाय 20 नहीं कर सकते, बेटर यू टेक 10. I mean, I want to normalize the data, I want to minimize the data. So y my capital, just to divide it by 10, so it will become 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So now it is easy to take summation of capital Y rather than small y. So we are now talking about that. So indirectly what I will say, थोड़ा ध्यान दे दो मैं क्या बोल रहा हूँ. I will say we don't have data of small x and small y with us, but we have the data of capital X and capital Y with us. अभी पहले जो दो कॉलम है उसको छोड़ दो. You don't think about first two columns, which is actually given data. You think on the, the what we designed the two columns, capital X and capital Y. Can you tell me what is your regression line? What is parabolic? अभी थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं आप? अब स्मॉल x और स्मॉल y के बारे में मत सोचो, कैपिटल x और कैपिटल y. कैन यू टेल मी व्हाट इज पैराबोलिक कर्व? यहां लिखता हूं मैं. व्हाट इज माय सॉल्यूशन? पैराबोलिक कर्व इज फॉर लिख रहा हूं मैं, कैपिटल x एंड कैपिटल y. क्या होता है? कैन यू टेल मी? कैपिटल y इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल x स्क्वायर b into capital X plus C. This is called your parabolic equation, but for capital Y, capital X. Are you getting? Yes, sir. हम देखो स्मॉल x स्मॉल y के बारे में नहीं सोचेंगे. वी विल थिंक नाउ x एंड y कैपिटल. तो ऐसा समझो कि आपको कैपिटल x दिया, ऐसा समझो आपको कैपिटल y दिया और उसके ऊपर हमको डील करना है. आर यू गेटिंग? पहले दो कॉलम इग्नोर करो. अभी x और y हमको दिया ऐसा समझो, और x और y कैपिटल है, उसका द पैराबोलिक कर्व आएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखता हूं मैं, सी दिस इज माय कैपिटल y इज इक्वल टू a टाइम कैपिटल x स्क्वायर प्लस b टाइम कैपिटल x प्लस c. दिस इज कॉल्ड माय एक्चुअल आंसर, बट आई वांट टू फाइंड abc. तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? आई वुड लाइक टू टेक समेशन. तो समेशन ऑफ कैपिटल y is equal to a into summation of but capital X square, b into summation of but capital X, and c into n आएगा. So this is my one equation. Now second equation, let me multiply by capital X. So you will get capital X into capital Y but summation is equal to a into, let me multiply by capital X, so it will become x cube, b into multiple capital X, it will become x square summation, and c into multiple capital X. So I am dealing with capital X and capital Y by ignoring small x and small y. Please remember this. And third is that I will multiply by x square, capital X square into y is equal to a times, now see capital, we have the x raised to 4 plus b into summation of capital X cube and c into what we have capital X square. Now this is one more equation. तो मैंने कुछ भी नहीं किया. सी दैट अर्लियर जो हमने लिखा था वो स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल द स्मॉल x स्मॉल y में था. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? स्मॉल कैपिटल x और कैपिटल y में डील कर रहा हूँ by ignoring small x and small y. So my answer will come, मतलब fitting of the data will come in capital Y and capital X rather than small x and small y. इतना ही फर्क है. तो नाउ आगे क्या क्या लगने वाले आपको? जस्ट टू गो, हमारे पास समेशन y चाहिए, समेशन x y चाहिए, समेशन x स्क्वायर y चाहिए. आई मीन ऑल कॉलम्स एज इट इज आर रिक्वायर्ड टू गो. यू कैन से इट इज कैपिटल द x स्क्वायर, कैपिटल x स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, देन कैपिटल x क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, and capital X raised to 4, that also I required. तो आपका बहुत कैलकुलेशन कम हो जाएगा. लेट्स सी हियर, देन कैपिटल X into Y and capital X square into Y. Such a questions can be minimized. I'm not saying all questions can do. Now देखो अभी कैपिटल मतलब हम जो डेटा फिट कर रहे हैं कैपिटल X और कैपिटल का Y कर रहे हैं, then I will tell you what to do to come back. Now what is X square? Tell me. What is x square? कैपिटल की बात कर रहा हूं, इट इज 16.
Am I right? It 9. is 9, it is 4, it's 1. It's 0, 1, 4, 9, 16. You know, summation of x always will come 0. Am I right? अरे समेशन ऑफ कैपिटल एक्स कितना आएगा? 0 आता है ना बेटे? यस सर. ओके. समेशन ऑफ वाई कितना आता है? थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैन एनीवन विल हेल्प मी? Sir, 78. 78. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है? देखो कैपिटल, अभी इसमें एक्स स्क्वायर जो आता है ना, तो आप क्या करेंगे? डबल करेंगे. बिकॉज सी 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 60. 30, 30 इंटू 30, 30 प्लस 30 60. देखो आपका कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है. इवन आई एम डूइंग मैन्युअली. अभी समेशन ऑफ एक्स क्यूब लेना है. प्लीज रिमेंबर समेशन ऑफ एक्स क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज समेशन एक्स 0 है. I hope many students understand what I want to say. Yes, sir. अरे देखो ना, अगर मेरा x कैपिटल x का समेशन 0 आता है, तो यू नो -4 का क्यूब हम लेते हैं तो इट विल बिकम -64. -3 का अगर क्यूब लेते हैं तो इट विल बिकम -27. -2 का क्यूब लेते हैं तो इट इज -8. -1 का क्यूब लेते हैं -1 एंड द थिंग्स विल रिपीट. Things will repeat. So answer would be 0. Are you getting? Yes, sir. Yes, so now x raised to capital 4 का सम, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा. It is 256, then it is 81, this is 16, this is 1, 0, 1, 16, 81. Is it right now? And 256. तो ये थोड़ा डबल हो जाएगा, जितना बिलो है उतना ऊपर है. So I mean 81, I don't know this. Can you do it? Sir, 708. 7? 08. 708. बस. अभी x और y भी कैपिटल. यू डोंट थिंक अबाउट फर्स्ट 2 कॉलम. पहले 2 कॉलम छोड़ दो. अभी कैपिटल x कैपिटल y के साथ ही हम डील कर रहे हैं. तो कैपिटल x इंटू कैपिटल y कितना आता है? देखो -8. मैं तो और विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ. -18, -14, -8, 0, then 10, then 22, then 36, and then 52. How much this one? 72. 72. Okay, and finally x square into y करो थोड़ा. x square into y 32. कैपिटल के बात करो. 9 into 6, 54. 7 into 4, 8 into 1, 0, 10, 44. 108. 108, and last one 13 into 16, 208. 208, and sum would be 492. 492. अभी देखो, अभी इसका मैजिक देखो क्या हो रहा है. 489. सॉरी, 480, 9. 489. 480 आ रहा है. 492 है सर. ओके, इस ओके ओके ठीक है. तो आप एक कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं. मेरा इंटेंशन है नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउ देखो, हमारे पास एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं है. फिर मैं बोल रहा हूँ, वी डील विथ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. और हम जो डेटा फिट करने वाले वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का डेटा पैराबोलिक फॉर्म में फिट करने वाले हैं. इसका मतलब आई हैव दिस 3 इक्वेशंस. यू नो, capital Y is ax square bx plus c, then capital summation of capital Y, summation of xy, capital summation of x square. So just to put all the results here. So now here, what is summation y? Capital Y. Summation capital Y कितना आ रहा है? 78 is equal to, देखो कितना सिंपल है. summation x square कितना आता है? 60. तो 60 times a,
समेशन x कितना आ रहा है 0 एंड n मतलब 9 टाइम्स ये ओके। देन यहां देखो, यहां आपको डायरेक्ट एक वैल्यू मिलने वाले है, लेट मी नो। समेशन एक्स वाई इज 72, नाउ समेशन एक्स क्यूब इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर इज 60 बट 60 टाइम्स b आएगा and this term also equal to 0 because summation एक 0 आ रहा है। तो I mean this equation will help us to go for b। तो b मेरा मिल रहा है 72/6, कितना था? आई थिंक दैट 1.2 आ रहा है। Yes, sir. b is 1.2 आ रहा है, am I right? Yes, sir. Yeah. Then you can go in last case, x square y is a 492, then summation x raised to 4 is 708, but you know the a b, अभी b जो मेरा है, सी दैट मेरा b जो है is 1.2 है into summation x cube is a 0, so of course this term will become 0 and c is equal to the x square, तो I mean it is 60 times you know the c, तो ये लिखने की जरूरत नहीं एक्चुअली 60 times c। I hope are you getting? Yes, sir. तो आपको जो पहला जो इक्वेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इक्वेशन, ये जो यू नो दिस इज सम यू नो द लॉजिक एंड टेक्निक्स एज यू नो द मैथमेटिशियन कैन यूज टू मिनिमाइज यूर कैलकुलेशन। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, सी दैट इसमें जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इट इज इन एसी फॉर्म, यू नो द लास्ट इक्वेशन इज इन एसी फॉर्म, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल टेल मी दैट माई ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, Minus Minus 0.09. 0.09. -0.09, मेरा बी कितना आ रहा है 1 9. पॉइंट, 1.2. एन सी कितना आ रहा है 9.27. 1.27. 9.27। अब अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपका एबीसी वैल्यू और हमारा अर्लियर एबीसी वैल्यू रॉन्ग है। होना ही चाहिए रॉन्ग, बिकॉज इट विल नॉट मैच, लेट मी टेल यू, बिकॉज हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का डेटा फीड किया है, हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का डेटा फीड नहीं किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो अभी क्या करेंगे, कैन यू टेल मी? लेट मी गो फॉर फाइनल आंसर। व्हाट इज माय फाइनल आंसर? टेल मी। कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स capital X and plus C, that is called 9.25. So this is called parabola fit of you know the capital X and capital Y word. It is parabolic, you know the curve of capital X and capital Y. Again I am repeating, it is not small x and small y. So what I will do, I will replace, you know, replace. What is capital Y? Tell me. Small y by 10. Great. What is capital X? X minus x bar by 10. X minus X bar upon 10. मतलब क्या है? X बार मतलब आई थिंक 50 है शायद। 50. बाय व्हाट, हाउ मच? 10. 10. हो गया आपका स्मॉल x में रिजल्ट। नाउ यू कैन पुट कैपिटल Y स्मॉल y by 10 is equal to minus 0.09 into capital X, but capital X is my small x minus 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, मतलब 100 आ जाएगा, प्लस 1.2 into x, but capital X is small x minus 50 by 10 and C is 9.27। अगर आप इसको सॉल्व करते तो ऑफ कोर्स यू विल गेट फाइनल आंसर। आप सॉल्व करो, y will become your a times of you know the x square plus b times of x plus c in this format। अगर आप सॉल्व करते तो आर यू गेटिंग? Yes, sir. This is called your required answer. I mean this could be one approach
ये मैं ज्यादा बच्चों को नहीं बताता बिकॉज यू नो दिस इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर हम वर्क कर सकते, बिकॉज जब मैंने सोचा कि x कैन बी मिनिमाइज, y कैन बी मिनिमाइज, सो आई विल डू लाइक दैट वे, so calculation will minimize. Otherwise better you can go by same way, there is no need to check, थोड़ा सा time लगेगा but you will get answer. I hope you are getting what I'm saying. Yes, sir. Good. Do you have any problem now? I hope you will solve like the questions. अभी रिग्रेशन लाइन का कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, इज इट राइट ना? सपोज दे आस्क फाइंड रिग्रेशन लाइन x on y or y on x, are you able to find out? Yes, sir. Yes, sir. ओके, रिग्रेशन लाइन x on y, y on x है, तो मैंने बताया था ना यार, लेट मी गो बैक हियर। या देखो, रिग्रेशन लाइन x on y, y और x, आपको x और y का कॉलम दिया है, आपको x स्क्वायर का कॉलम लेना है, आपको एक्स वाई का कॉलम लेना है, आपको वाई स्क्वायर का कॉमन लिया है, और जैसे हमने 3 इक्वेशन अभी ए बी सी के लिए सॉल्व किए, वैसे हमको 2 इक्वेशन सॉल्व करना है ए बी के लिए, इंटीग्रेशन लाइन y on x और y x on y। ओनली कीप इन माइंड दैट विच लाइन यू वांट टू फाइंड आउट। अब एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था क्लास में, इफ इट इज नॉट मेंशन, सर अगर ऐसा मेंशन नहीं किया है कि फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x और फाइंड रिग्रेशन लाइन x on y, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, यू आर फ्री टू टेक रिग्रेशन लाइन y on x और x on y, एनी वन ऑफ देम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. या लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन, देखो चलो मैं थोड़ा सा आपका टैलेंट देखता हूं, सपोज माय क्वेश्चन लाइक दिस वन, फिट रिग्रेशन लाइन ऑफ फॉलोइंग डेटा, ऐसा क्वेश्चन है, सपोज फिट द रिग्रेशन लाइन ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड find x when your y is equal to suppose 30. Can you tell me which regression line you want? But अब इसमें आपको स्पेशली वही रिग्रेशन लाइन इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। यू नो y is given, you want to find x, means x is depend upon y, am I right now? X on Y. X on So Y. yeah, so Yes, in sir. this case आपको रिग्रेशन लाइन x on y ही फाइंड करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, तो ही आप y की वैल्यू पुट करके x को निकाल सकते हैं। हाँ, यू विल फाइंड आउट y ऑन x लाइन, आप एक y और x लाइन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज रिमेंबर यू कैन नॉट फाइंड यू नो द आंसर ऑफ x फॉर y, बिकॉज y यहाँ इंडिपेंडेंट है, और जब हम x ऑन y की बात करते हैं तो x इंडिपेंडेंट होता है। तो नाउ दैट कुड बी वन ऑफ द यू नो द क्लू फॉर यू पीपल to which line you want to find out. If it is mentioned find x is you know the find x when y is 30, और उल्टा भी हो सकता है, see that for example find your y when x is 30, तो इसका मतलब सी x दिया है, y फाइंड करना है, your line would be like this one, so आपको x दिया है, y फाइंड करना है, तो आई मीन रिग्रेशन लाइन y on x फाइंड करना है। हाँ, ऑफ कोर्स इफ नथिंग इज गिवन टेक एडवांटेज to find out any one of the line, it is enough. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, any doubt my dear student? No, sir. No, sir. Okay, can we stop? Actually I have taken more time, I think that it was actually 2 घंटे का लेक्चर 3 में गया, but entire you know the revision of chapter I have done. You understood? Yes, sir. Sir. Okay, Yes, sir. fine. Thank you Yes, for sir. your patience. Yeah, patience, Yes, because sir. beyond the time 1 hour you have shown the patience, even though on Republic Day where you should actually enjoy and eat the sweets. Okay, can we stop? Yes, Yes. sir. सर हाँ बोलो। अब प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट, अब प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट 2 सॉल्व करो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. असाइनमेंट 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, सो दैट द टुडे एंड टुमारो यू विल गेट आइडिया अबाउट दैट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू नो हाउ टू गेट द सॉल्यूशंस। डोंट वरी अबाउट फाइनल सॉल्यूशन, कैलकुलेशन में आप शायद मिस्टेक कर सकते हैं, दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल, यू नो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ डाउट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? Yes, sir. या हाँ बोलो, शीतल कुमार, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. No. I was saying yes, sir. Okay, okay, thank you. So shall we can we stop? Yes, sir. Okay, take care. I will stop Sir. the recording so that you people will able to also you know see that recording.
इसमें ही मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। ओके